चल रही है या बीच में थोड़ा सांस ले रहे हैं? Are you tiring out or still going strong in it? See, optional subjects are like marathon races. Optional subjects are like marathon races. You have to keep the momentum, and the good thing is that the teacher keeps on changing the topics, so that does help you some way. And there's a lot of homework which I keep on giving you to engage you, as long as you are not offended by that much homework. Teacher बहुत सारा दे रहे हैं. Another thing which I have done is if you look at the update section of the course, ओशनोग्राफी का कुछ नहीं, ओशनोग्राफी नहीं, जियोमॉर्फोलॉजी का साइकिल्स हैव बीन पुट, जो लैंडफॉर्म्स आपके खत्म हो चुके हैं, दैट हैज आल्सो बीन पुट. खुशी बोले नो सर, टाइम नहीं मिल पा रहा है पेंडिंग वर्क करने का, बिकॉज संडे को भी क्लास हो रहे हैं. खुशी, आई गेट दैट एंड आई एम द कल्प्रिट, आई एम सॉरी. अगले संडे नहीं रखूंगा. बट लेफ्ट बिहाइंड विद समहाउ बट ट्राइंग टू कंप्लीट. ओके, परफेक्ट. पूर्वी, सॉरी सर, वाज नॉट एबल टू अटेंड यस्टरडेज क्लास. आई विल टेक रिकॉर्डिंग आफ्टर क्लास. कैन आई अटेंड टुडेज लेक्चर? हां, आज का कर सकते हो. शायद हमने बायोटिक रिसोर्सेज किया है. यू कैन डू इट. इफ समबडी इज जॉइनिंग इन न्यू, वो भी कर सकते हैं आज का. तो आज का स्टैंड अलोन टॉपिक है. यस सर, संडे को ऑफ होना चाहिए. मधुकर, बिल्कुल आप झंडा उठा के खड़े हैं, एंड संडे को बिल्कुल ऑफ होना चाहिए. मेरा भी यही मानना है. क्लाइमेटोलॉजी पूर्वी की सेपरेट क्लास, ठीक है. ओके, सो एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, क्लाइमेटोलॉजी का एडवांस क्लाइमेटोलॉजी लेक्चर्स आर अबाउट टू कम, एंड इफ यू लुक एट योर अपडेट सेक्शन ऑफ द कोर्स, उसमें एयर मासेस तक का कंटेंट भी डला हुआ है. इफ यू हैव लुक्ड एट द हैंडआउट्स, एयर मासेस का हैंडआउट हैज ऑलरेडी बीन पुट ओवर देयर, बट फ्रॉम माय साइड आई हैव नॉट कंप्लीटेड. सो एज यू पीपल आर सेइंग सर बैकलॉग है, वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट. अब सोचिए, द टीचर इज आल्सो कीपिंग द सेम थिंग्स विद हिमसेल्फ. सो मेरे पास भी बैकलॉग होता है, मैं भी उसके लिए टाइम निकालता हूं. सो एज सम ऑफ यू आर सेइंग मधुकर ने कहा सर छुट्टी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए मधुकर. इवन आई फील नो हॉलिडे फॉर मी आल्सो makes it a very big challenge. See, today we have 3 classes. So एक ये है, एक शाम को GS की क्लास है, and then GS में I would be starting about Indian geography. मेरे ख्याल से आज उसमें population होना है. I don't exactly remember आज का lecture क्या है मेरा, ठीक है. That I will see after this class. I'll look at the course plan, what is it, and then I look into this. अब प्रियांशु बोल रहे हैं आज इंडस्ट्री है. So Indian industry in itself it's a huge challenge कि सारी इंडस्ट्री से स्टूडेंट्स को एकदम से अवेयर करना. And 9 PM I also have that environmentics. And environmentics में इतनी silly mistakes कर रहे हो यार टेस्टिंग में. Why so many mistakes? खुशी बोले सर, आप जो पीडीएफ शेयर करते हो वो कुछ प्रिंटेबल होते हैं, कुछ नहीं. तो खुशी, वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ जो है उनमें जो सेव हुआ है, जैसे मैंने कहा ना, देयर इज अ मिक्स ऑफ देम. कुछ में प्रिंट परमिशन थी, कुछ में नहीं थी, तो आई एम नॉट लुकिंग इनटू दैट. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. सर, एनरोल योर फर्दर जीएस क्लास. तो जीएस क्लास तो होगी, बट देयर आर पीपल मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स इन दो सिंपल क्वेश्चंस सर. सो दोस पीडीएफ यू आर सेंडिंग दिस आर नॉट प्रिंटेबल. सो सम ऑफ देम वर प्रिंटेबल, सम ऑफ देम वर नॉट. तो अभी मैं चाहता हूं कि आप उसे देख सकें, एटलीस्ट यू वुड बी एबल टू यूज देम फॉर द प्रिपरेशन. नॉट एबल टू अटेंड द क्लास फॉर लास्ट 3 days. आई वाज ओके, सम हेल्थ इशू एट होम. चलिए, तो बैकलॉग कवर करिए. पूर्वी ने कई बार ये सजेशन सभी को दिया है कि ऑल पीडीएफ्स व्हेन यू कन्वर्ट देम इनटू जेपीजी, दे बिकम इमेज फाइल्स, यू कैन वेरी वेल प्रिंट देम. ठीक है, तो इस सॉल्यूशन पे पहले भी बात हो चुकी है. सो एट माय एंड लाइक आई लास्ट टाइम अपलोड ही नहीं हो रहा था, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जाएंगे, एंड आई डोंट वांट यू टू मिस ऑन द मटेरियल. सो दैट इज व्हाई व्हाटएवर इज द सिक्योरिटी सेटिंग्स, इफ इट डज नॉट अलाउ यू प्रिंट, इवन देन आई अपलोड इट, एंड पूर्वी हैज ऑलवेज मेंटेन दैट जेपीजी में हो जाता है. सो प्लीज एक्सप्लोर दैट ऑप्शन. 5 minutes was your time. Any questions? No questions coming in. So shall we start? ठीक है, तो हमने रिसोर्सेज की बात की थी. We were talking about biotic resources, what ocean does for us, and we saw that in the biotic resources a big thing was the fish. Yes, apart from other things, तो बहुत सारी चीजें देता है. fish है, seaweeds हैं. Yes, I would say in a way fossil fuel is also a biotic resource only. Fossil fuel is also a biotic resource, but I will take them in the energy resources, so that is why I have not taken them. And I ended my class on the fact that the global fish catch has stabilized. The fish catch, marine fish catch, is not increasing, and it is the terrestrial one which is there. So मैं सबसे चाहता हूँ कि like if you get a question, write a short note on seafood नहीं करता हूँ, food from sea. Take a fresh page. This process is called brainstorming. The rule 1 of brainstorming is that you do it with a pencil or a pen and paper. Brainstorming done without a paper is hallucination. It's daydreaming. Rule number 2 of brainstorming is never write full sentences. So what do you write? Phrases. Number 3, which is the most important thing about brainstorming, is what is the most important thing about brainstorming? Random. Unstable. So everyone, what do you want in life? Randomness or stability? What do you want in life? Randomness or stability? Stability. Everyone wants stability. Perfect. Do you want concentration or deviation? Do you want things concentrated or too much of deviation? Okay. So you want
stable. You want concentration. But there's a problem. You have an organ. You have an organ which has a tendency to wander. It does not concentrate. It deviates. Yes or no? क्या करें? There is a fight. This wants a disciplined approach. You want a disciplined, consistent approach. ये कहता है, this is boring. I want thrill. I want excitement. So Saurabh is saying after that stability will happen. Oh yes, Saurabh. तो इस लाइफ में तो होना नहीं. Dolly is saying stability is boring. हर चीज वही, सुबह उठना, उतने बजे उठना है, ये एक्सरसाइज करनी है, then I'll do my questions. सचिन सर ने होमवर्क दिया, I'll do that, then I'll sit for the class, before the class. So that's what you want. You want, yes or no? And this is what you are. This is, can I say, this is the animal in you? And who's this? This is the social animal that you've become. Everyone, yes or no? Social animal. You were born an animal, the real animal. But mama, papa, society tamed you. Yes or no? Social tamed animal. फालतू इंसान. फालतू से फालतू इंसान. Yes. And all of you have a wild streak. वो दिखा ही नहीं सकते. Yes or no? सर वो आपको नहीं बता सकते सर, है तो. सर लास्ट टाइम बचपन में दिखाया था, एक पढ़ा था. ट्रू. सर आई इंसिस्टेड कि और दिखाऊंगा, फिर और पढ़ा. अ पॉइंट केम से द बैकबोन सेड अब इतना पिटने की जरूरत नहीं, मान ले, कीप इट इनसाइड. ट्रू और नॉट? यस. यू आर अ कन्फॉर्मिस्ट. ये स्टेटस को पे काम करता है. जो है चलने दे भाई. ये कौन होते हैं? रेवोल्यूशनरी. अ फाइट चल रही है आपके अंदर. इज अ फाइट गोइंग ऑन और नॉट? Now I want to tell you whether the fight is valid or not. Every fight, every battle involves energy. Yes or no? Spending of energy. And today I don't want to waste that energy in the fight. So let me go with the animal. Brainstorming works the brain's way. Random, unstable. जो आ रहा है, food from sea. Octopus को कच्चा चबा जाऊंगा. Eat octopus. True. Food from sea. That's ridiculous. But that should come. Everyone, are you ready for brainstorming? The brainstorming which is the most freak, most random will be the best. Ready? Do I start the time? और ये मत सोचो मोटिवेशन दे रहा हूँ, प्रोसेस दे रहा हूँ. I'm giving you a real process for real answers. Is everyone okay? So you have to take a fresh sheet. On top write food from sea. And how do you write it? Random. एक बात बताइए मुझे, everyone. You have notes written like this, and you have notes written like this. A and B. Which are good notes? Obviously, A is good notes. A is good notes because B is random. So what do I want you to do? Don't do notes, do random. ठीक है? क्या दिखना चाहिए? जो भी आया सब लिख दूंगा. Do we start? No filters. Fourth rule is no filter. ये बात है, ये थोड़ी, ये तो बहुत सिली है. No filter. Is everyone ready? So I'm keeping time 1 minute. Stop clock से. Start. Everyone start. On your paper. Don't type anything. Thirty seconds gone. Okay, stop. Everyone stop. How was this random exercise? Good or waste of time? Whatever you are, A or B. A or B. No problem, you can say B also. It's always a waste of time. Perfectly. Now second, please count. Count how many points you had. Everyone to count. Please count the number of dimensions you got in this exercise. 4, 3, 6, 3, 8, 4, 4 to 5, 4 to 5, 4 to 6, 11, 11, 9, 10. Okay. So anyone who is less than 10 is fail. Less than 10 is fail. You are so tamed, you are so structured कि आप wild सोच भी नहीं सकते. आप सोच भी नहीं सकते. Food from sea. You can imagine आप वहाँ पे कैसे आंसर लिखोगे. Do you know so many people come to me, सर आंसर राइटिंग सिखा दीजिए. बहुत से बच्चों ने कहा कि आपके पास आए, they learned आंसर राइटिंग and created magic. सर हमें भी सिखा दीजिए. अंदर एक ही चीज होती है, सर मटेरियल दे दीजिए, रट लूंगा. रिप्रोडक्शन. रैंडमनेस था ही नहीं. 4 पॉइंट तो यार कोई भी कर लेगा, उसके लिए पैसा देकर इस उम्र तक आने की जरूरत ही नहीं. फूड फ्रॉम सी में तो मैं कहूंगा फिश. आई लव फिश. I love oil. Fish has oil. Fish oil is unique. Fish has very special nutrients. White meat. I am
vegetarian. Can somebody eat octopus? I have allergy to seafood. The sea animals, I am afraid of them. How do we fish? Which country? देखो कितने सारे आइडिया. 1 minute. इसे randomness कहते हैं. This is randomness. I did not even take randomness. आप सोचिए, देखिए फिर मैं बोलता हूँ ऐसे तो बच्चे बोलते हैं टीचर बहुत गुस्सा करते हैं. मैं बोलता हूँ बहुत शर्म की बात है. बहुत शर्म की बात है. अगर आपसे कहा फूड फ्रॉम सी पे लिखिए कुछ भी, बोला 4 डायमेंशन. क्या लिखा 4? अच्छा एक और बात बताओ. You got 4 points and 4 also I am very sure they are just a repeat of whatever was your first point. ठीक है? आपको आंसर लिखना है 10 मार्क्स का. आपके पास तो कोई डाइवर्सिटी नहीं. Why would the examiner give you marks? Why are people who did not prepare very well for mains, even they are getting an interview call? You know what? They did not prepare for those PDFs. They did not mug it up. उनके पास बटन दबाते ही फूड फ्रॉम सी के 4 पॉइंट नहीं आते. वो कुछ भी लिख सकते हैं. वो ये लिख सकते हैं only littoral states have that advantage. जापान की तो प्रॉब्लम है and food from sea is limited because fish is limited. Climate change is impacting this food from sea. देखिए कितने सारे पॉइंट्स आएंगे. Do you know why answer writing does not happen? ये जो आंसर राइटिंग की बातें कर करके क्लासेस चलती हैं उसमें होता क्या है, टीचर आकर अपना ही तो ज्ञान बताता है. बेटा ये भी लिख सकते थे, you could have written this also, you could have written this also, you could have written this also, बताता है ना. अच्छा एक बात बताओ, how long has the teacher been teaching the same topic? Last 5 years, 6 years, 7 years, 10 years, 15 years, 20 years. उसको तो पॉइंट्स रटे हुए. True or not? So when he comes and does that, you tell me someone has been playing the role of Hanuman in Ram Leela for last 10 years. वो नॉर्मल लाइफ में भी हनुमान जी का डायलॉग बोलेगा कि नहीं बोलेगा? वाओ सर, सच ब्यूटीफुल एसे सर, यू आर तो सर फाउंटेन हेड ऑफ इट. आपको क्या मिला? सन्नाटा. You don't even have this ability. एक सिंपल चीज पर क्या आप सोच के 10-15 डायमेंशन निकाल सकते हैं? इसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग. बहुत से टीचर्स यहीं से मुझसे सीख के गए हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, और बाहर जाकर ब्रेनस्टॉर्मिंग के नाम पर अपने नोट्स बच्चे को दिखाते हैं. देखो ये होती ब्रेनस्टॉर्मिंग, और अपना फिर से वही करता है. उसे ब्रेनस्टॉर्मिंग समझ ही नहीं आई. आया तो था वो सीखने, आंसर राइटिंग टीचर भी बन गया, बट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड ब्रेनस्टॉर्मिंग. वो जाकर क्या कहता है, ओके किड्स लेट्स डू ब्रेनस्टॉर्मिंग, और उसके बाद अपने पॉइंट्स एक एक करके लिखवाना शुरू कर देता है. आई एम जस्ट आस्किंग यू. अभी आपने कहा हंसते हंसते, हाँ सर ये बोरिंग होता है, मैं तो ये बनना चाहता हूँ. आपका तो दिमाग भटका ही नहीं. जिनके 4 पॉइंट आप देख लो, आपके वही पॉइंट है जो बुक्स में लिखे हुए, उससे ज्यादा तो आपने सोचा ही नहीं. एंड टेल मी अ स्टूडेंट हु हैज 10 डायमेंशंस, अ स्टूडेंट हु हैज 10 डायमेंशन एंड अ स्टूडेंट हु हैज 3 डायमेंशंस, दोनों के आंसर बदल जाएंगे कि नहीं? So that is what now till the exam no I will mug up everything. Beta, is UPSC asking what you mugged up? You tell me if you have given the exam, be it prelims or mains. वो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से तो क्लेम कर रहे हैं कि जो हमने पढ़ाया, देखो बच्चे कल पढ़ाया था आज ही आ गया. ऐसा होता है क्या? फूड फ्रॉम सी थोड़ी आएगा, बट एनीथिंग फ्रॉम सी कैन कम. यस और नो? सो मेरा रिक्वेस्ट है, मैंने क्लाइमेटोलॉजी में भी ट्राई किया था आंसर राइटिंग का, और अभी भी कह रहा हूँ. और एक और चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके 4 पॉइंट्स आए, 5 पॉइंट्स आए, 3 आए, 10 आए. यू नो व्हाट, आई स्पेंड 10 मिनट्स इन दिस डिस्कशन. दे विल बेनिफिट फ्रॉम इट. डू वी गेट दैट? लेकिन यहाँ पर सर्वज्ञानी भी है. दे नो एवरीथिंग. तो देख रहे हैं ये क्या पढ़ाता है. वो 4 टीचर से पढ़ चुके हैं, 2 बुक से, और मैं तो हमेशा यूनिवर्सिटी स्कूल में मैंने तोड़ा है. मैंने भी तोड़ा था स्कूल में. एवरीवन नोज सीबीएसई का बोर्ड तोड़ने में क्या लगता है. डू वी गेट दैट? सो उनके लिए एक्सरसाइज वेस्ट है. इनफैक्ट वो वेट कर रहे हैं नोट्स कब देगा. ऐसे भी बहुत है, और ऑनलाइन पे तो बहुत भर के. ट्रू. सो इफ यू ट्राइड, इफ यू गॉट 3, 4, 5, आई होप यू अंडरस्टूड वेयर यू मिसिंग. ठीक है. तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से जो इसमें जेन्युइन है. मैंने शुरू से पहले दिन मैंने कहा ना, छोटा सा लैंप चाहिए, पूरा रास्ता पार हो जाएगा. ठीक है. बाकी लोग पूरे एनवायरनमेंट को वो ब्लेम करते रहेंगे, उसमें कोई वो नहीं. आपके पास अपना लैंप है, उस लैंप की रोशनी बढ़ानी है. आई हैव अ रिक्वेस्ट, कोई भी टॉपिक लेते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बोर होते हो, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उस टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्मिंग 1 मिनट की, 1 मिनट करना, वरना ब्रेन की वायर्स बाहर आने का डर रहता है. एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग इन द रियल स्पिरिट. इसीलिए मैंने कहा ना, ये आपको अच्छा लगा है वेस्ट ऑफ टाइम. वो बी वालों ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है. वो बैठा हुआ नोट्स लेने, वो कोचिंग के नोट्स इकट्ठा कर रहा है. वो आया भी इसमें कि आज क्या पढ़ाने वाला. एब्सोल्युटली 100% दे आर इनटू दिस. व्हाट इज दिस फेलो गोइंग टू टीच. मैं थोड़ा सा लेकर, जो चोरी वाली नेचर है ना, चोरी वाली नेचर, किसी तरह छीना झपटी करके. अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन इज नॉट अबाउट छीना झपटी. एजुकेशन इज अबाउट ग्रोइंग. आई ग्रो, यू ग्रो, एंड इट्स जस्ट ग्रोथ. एंड इट विल हैपन व्हेन यू एक्सपीरियंस दैट. ओह माय गॉड, आई हैड अ ब्लॉक ऑन दिस, आई नेवर थॉट इट लाइक दिस, एंड दिस विल हैपन. आपका एसे, आपका जीएस, आपका ऑप्शनल. समबडी सेड सर जीएस में कोई नहीं करा रहा है. मैंने कहा सब में ये वैलिड है, सब में वैलिड है. एंड योर जीएस टीचर्स, यू हैव गुड जीएस टीचर्स, उनसे भी बात करें. गुड ऑप्शनल टीचर्स हैं, उनसे भी बात करें. बट दिस इज योर कैपेसिटी, दिस इज योर कैपेसिटी. तो करते हैं तो अच्छी बात है, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं. तो फूड फ्रॉम सी, जो मेरी क्लास, पिछली क्लास हुई, this is a continuation of that we were talking about food from sea. I want to tell you, food from sea is very different from food from land in terms of its nutrient content, in terms of its protein content, in terms of its availability. Fish is white meat, तो ऐसा भी नहीं कि रेड मीट है, लाइक यू नो पीपल गो फॉर मटन, पीपल गो फॉर पोर्क एंड ऑल दोस यू नो एनिमल मीट. वो सारे मीट्स की जगह पर फिश इज वीट मीट,
white meat, yes or no? उसके बाद fish के अलावा there are other things also which are coming from fish, तो हम वो भी बात करेंगे, yes. So that has to be there. फिर why only that? We will also answer in this question how to make it geographical. Where is there plenty of food from sea? तो वो क्लास में जो मैप बनाया था वहां से मिल जाएगा, plenty of. अच्छा, what is the challenge associated with food from sea? So sustainability, remember. How have we dealt with it? We dealt with it through mariculture, aquaculture, yes or no? And in that, what is happening? It is coming across as a very important source of protein, very important source of protein and other nutrients that we are talking about. Yeah, it was answer ho gaya. The root of a good answer is good brainstorming. The root to a good food, good dish in your kitchen is the raw material that is there in your kitchen. True or not? So brainstorming is a smart way where you do not fight your brain. Where you do not fight your brain, you stay with your brain. And you actually see the length and breadth and the width of your imagination. I'm saying you want to clear an exam which involves writing, this is the process. You want to be a writer, this is the process. You want to be a good answer writer, this is the process. Your essay should get you good marks, this is the process. And I want to tell you, students who have been associated with me for very, very long, or to career mein bhi hai, civil services mein, they say that all walks of life, sir, I use brainstorming now. Because this gives me the ability कि मैंने सोचा है, मेरे views क्या हैं, then I'm not afraid even if a decision does not go my way. Because I thought that this will go this way, and my calculation, it is not going, so now I know, okay, this is the change which I need to do. So brainstorming, जैसा कि आपको एक word याद होगा, possibilism की तरफ ले जाता है आपको. Possibilism means you are able to make a difference. And ये जो है social tamed animal जो हम हो गए हैं, looking good, हमसे बढ़िया कोई नहीं, और जो अपनी कमियां हम छुपाते हैं, we start hiding our weaknesses, वो सारे social tamed है, because यही बताया गया हमको. See, whether you're good or not, people should see that you are good. Yes or no? I would say that this is the biggest impediment in the way of learning. If I'm not good, let it come out. No, if I have some ailment, let it come out and let me remedy that. So food from sea, a very, very simple looking topic. Is it connected from the previous lecture? People who attended the last lecture would be able to appreciate where we are looking at the connection. Do we get that? And if you did not have the connection right now, no problem. It is just a reminder. Ki connection chahiye ho. Just a reminder. Connection chahiye ho. Nothing is lost. No. So can you bring that or not? Everyone who's listening to me, can you bring that on? May not be right now with you. Can you bring that? But the only thing is, only reminder is, you do not learn swimming by reading about swimming. You learn swimming by jumping into water. So daily brainstorming कितना मांग रहा हूँ यार? 1 मिनट 2 मिनट, ठीक है? कभी मेट्रो में हो, ट्रेन में हो, yes. And not every time your neighbor is very romantic, yes, very beautiful. कभी कभी तो आपको टाइम मिलेगा. Pull out a pen and a pencil and brainstorm. Save that time. But don't brainstorm like this. फिर people will call you तारा ज़मीन पर. Don't do that. पेपर निकाला और लिखना शुरू. ठीक है. Mineral resources. Marine mineral resources. So Biotic I've ended with a sample of a question also. What kind of a question can come? So my intention is, see, with the beginner batches, it is, I would say, it doesn't make much sense कि इनको full answer लिखो. जब आपके पास content ही नहीं, you could see from the sample from the class and people who are listening to me in recording also, they're also, उतना content नहीं, तो answer लिखने का भी time नहीं. So rather than full answer, let us put you in a situation that if this question was thrown at you, did you have the equipment to attempt it? Moment you feel that, तो बहुत से लोग आंसर लिख भी देते हैं, मुझे भेज भी देते हैं, that's not an issue. But the fact is कि आंसर में एक maturity होगी तब मजा आएगा. Do you get that? So we are where? Marine mineral resources. तो minerals क्या होते हैं? Minerals आपने देखा कि elements, combining in fixed proportion. Is everyone with me on this? ये minerals होते हैं. तो ocean में बहुत सारे minerals हैं. Ocean में बहुत सारे minerals हैं. Where did they come from? ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, हिंट टू एवरीवन. Which sea is this? Which sea is this? Mediterranean Sea. Thank you. Mediterranean Sea is connected to Atlantic Ocean by which strait? Which strait? Sir, Gibraltar Strait. Okay. During the ice ages, the sea level went down. Yes or no? Sea level went down. So I want to tell you that there is a ridge at the mouth of this, and that. So ऐसा हुआ कि ये disconnect हो गए. The water of Mediterranean was in Mediterranean, and the water of Atlantic was in Atlantic, and the connection was lost. So now they are not there. So वैसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है ना बच्चे? देखिए, if this is Atlantic Ocean and this is Mediterranean Sea, they will always be in connection. But imagine if there is a ridge like this between them, and this is the sea level. As long as this is the sea level, exchange is happening. Yes or no? But if the sea level is this, true? Can a point come that they are not mixing? Everyone imagination. समझ में आया what I am trying to tell you? And something very funny happened. It is an inland sea.
not many rivers are coming over there. You know, Nile river is coming, but पानी नहीं है उसमें. Yes or no? And because of heat, remember this is around 30 degrees. Because of heat, this sea completely dried up. Mediterranean Sea dried up. Think about it. Mediterranean Sea completely dried up. What would you find at its bottom? What would you find at its bottom? Well, sir, bottom will have ocean bottom topography. With all that topography, since the water is going, it will be overlain by salt. Yes or no? Solid salt. Have you seen solid rock salt? देखा आपने? Now it is rocks of salt which have precipitated. Can I call the word? Can I use the word precipitated? कल पता नहीं कौन चैनल पे क्या उल्टा सीधा कर रहा था. Subsidence. The heavier plate subsides. अरे वो subduction है भाई. Subduction. एयर मास सर सब्सिडेंस क्या होता है? भाई ठंडी हवा है, ऊपर से जो भी नीचे आई वो सबसाइडिंग एयर है, और जो ऊपर जा रही है वो राइजिंग एयर है. उसमें पता नहीं कल किसी ने क्या ग्रुप पे पूछना शुरू किया, फिर एक आया प्लेट टेक्टोनिक समझा रहा था, कुछ भी कनेक्शन. तो मुझे लगा कि यू आर एट द ब्रेनस्टॉर्मिंग लेवल. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग नीड नॉट बी द फाइनल थिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ओनली रफ वर्क. सो आई सेड करने दो यार, स्टॉर्म इस बहाने कुछ सोच तो रहा है. फॉर अ चेंज माय स्टूडेंट इज थिंकिंग. यस, फ्रॉम थिंकिंग विल कम न्यूअर थिंग्स. So it's okay. So I did not participate in that. I was happy. और ये भी दिख रहा था, subduction and subsidence are two different things. Subsidence is generally the word used for air movement. Get that? For water movement, it is upwelling, downwelling. Water movement भी है ना, upwelling, downwelling. Air के लिए मैंने आपको बोला था currents होते हैं. Rising and sinking air is called current. So subsiding air, subsiding current and ascending current. Is it okay? और जो आपका plates हैं उसके लिए subduction. ठीक है? But ठीक है. So that was there. I was happy that you people are participating and keep participating. Group को इसीलिए use करना. कोई एक लिख रहा है हिस्ट्री के PDF कहीं मिलेंगे भाई. वो PDF हंटर जो है. उसके बाद थोड़ी देर बाद मैसेज भाई किसी ने बताया नहीं. मैंने कहा डिलीट करो यार, ये पीडीएफ इकट्ठा कर. थोड़े दिन पहले कोई आया था, मेरी ज्योग्राफी की बुक्स पड़ी हुई है ब्रांड न्यू 40% डिस्काउंट पे, किसी को खरीदनी है तो बताओ. ऑप्शनल भी लिया होगा. ही वुड हैव ऑप्टेड फॉर अ टीचर आल्सो. टीचर के साथ रहा भी होगा, टीचर के पीडीएफ भी छापे होंगे, बुक भी ब्रांड न्यू रखी हुई. आप बताओ आपकी बुक खराब हो गई कि नहीं होगी? आपकी एटलस पे कुछ लिखा है नहीं लिखा है? और कुछ नहीं तो कम से कम जिन्होंने नहीं लिखा यही कर दो यार, उन्हीं का नाम लिख दो. तेरे लिए 7 समुंदर पार ऐसे लिख दो, वेयर यू सी अ वर्ल्ड मैप. कुछ तो हो जाएगा. एटलस में होली खेल लिया, वेरी गुड, यू शुड. एंड हमने तो बोला हमारे नोट्स भी होली नोट्स होते हैं. बताओ बोल रहा है मतलब व्हाट अ शेमफुल थिंग. मेरी ब्रांड न्यू बुक्स पढ़ी है. मेरा मन था उसको लिख दो, रख ले, क्यों बेच रहा है, दहेज में काम आएगा, ससुर जी इंप्रेस हो जाएंगे. जिंदगी में कुछ पढ़ा था, बिकॉज वी कैन स्टिल यू नो प्रोजेक्ट दैट वी वर स्टडीइंग. किसे पता है क्या कर रहा था उधर. ये सुनो. सो एवरीवन प्लीज डू अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द ग्रुप. दैट ग्रुप बिलोंग्स टू यू. ठीक है? और जहां पे कुछ गड़बड़ होगा वो मैं हटा दूंगा. एंड देयर टू बी देयर. इट्स ओके. जैसे हम पीपल अपने कोर्स की मार्केटिंग के लिए होता है. अरे भाई तू अपना पार्टिसिपेट करना, कोर्स की मार्केटिंग कौन कर रहा है? आई एम टू सेइंग यू नो व्हाट इज देयर. नहीं, इनका कोर्स ज्वाइन करो तभी ये जो है पढ़ाते हैं. देयर वाज दिस फेलो आल्सो लॉन्ग अगो 2-3 मंथ्स अगो. वो भी कहानी करने आया है. एनीवेज, so people don't see you know like कि कोई सच में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है. so this is one platform which I have given you full access. आप लिख सकते हैं, लिखिए, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए. but definitely that is not a place to troll others, not a place to you know मेरा नाम भी अरोड़ा है, तुम भी अरोड़ा हो, आओ गर्लफ्रेंड बने. ये सब though brainstorming wise this is absolutely okay. So you know I was in Brazil once. So now this might sound very strange. तो ये सब फिल्मी लगता है. So the girl tells me, girl from Brazil says, you are handsome, I am beautiful, let's get married, we'll have kids, beautiful kids. ये वही वाला लॉजिक है. अरोड़ा. So she says, you are handsome, I am beautiful, let's get married, we'll have beautiful kids. And that's okay. Who'll take care of the kids? I'm here only for some time. She says, no problem, I'll take care. Brazil has, I think, a very, very high percentage of single mothers. Very, very high percentage of single mothers. There's so many people who have families who are not in Brazil but have families in Brazil. So बहुत ज़्यादा ऐसा होता है. तो मुझे एक बार तो याद है, उसने कहा तुम्हारा नाम भी अरोड़ा, मेरा भी अरोड़ा, आओ गर्लफ्रेंड बनोगी. बहुत सही यार, ये कहाँ से काफी प्रोग्रेस है. So don't do that on the group. Let's do something better. So tell me one thing. If you've seen that solid, if you have seen that solid salt, is it easy to break? It is easy to break. No, it is not. So does it dissolve easily? No, it does not. So what happened is rain, उसके बाद आया, and other things, sea level भी आया. Now the Mediterranean Sea is once again connected with Atlantic Sea. Yes or no? Atlantic Ocean, sorry. It has water, but I want to tell you, at the bottom, there are still these hard precipitated salt, and इसमें caves हैं अभी. People actually go in the shallow areas, no? Shallow areas में caves भी हैं. Go to Egypt, you can actually visit these caves also. One of my students is a foreign services officer in Egypt, so I would have talked about these caves in the class. So he sent me some photographs also of the caves. Sir, I visited them and these are there. So interesting things. I don't know, I just gave you a hint how minerals reach the oceans. Can you see sodium chloride is a mineral? So I'm not telling you a story for the sake of story. I just want geography to be real for you. Geography should not be theoretical. जल्दी से बता दीजिए कि marine minerals कहाँ से आते हैं. Whatever comes to your mind. Quickly. Volcanoes, absolutely okay. Black smokers, very good, Priyank.
मैग्मा वोल्केनो ठीक लग रहा है मुझे, आप लोग कह रहे हैं वोल्केनो, तो मैं इसको वोल्केनिज्म और वोल्कनिज्म, वोल्केनिक हो सकते हैं। सर रिवर्स से भी तो आ सकते हैं। यस यस, रिवर्स, रिवर्स कहां से लाएगी? रिवर लैंड से लाएगा, तो कैन आई कॉल देम टेरिजिनस, लिथोजिनस। ट्रू, बिल्कुल ठीक है। रेहान इज सेइंग डेड मरीन एनिमल, सो यस, व्हेन दे डाई they will leave their exoskeleton and body part, so biogenous, taken. Dolly say coastal erosion of rocks, Dolly, erosion of all forms, whether it is rain, the river or coastal, वो सब lithogenous में हो जाएगा। I have taken your point. Sayed, how is rain bringing, बताओ बच्चे, how is rain bringing? Rain तो मुझे पता नहीं। Corals mega biogenous, everyone who's contributing now please check that. Rakhi is saying ship sink, तो ship sink क्या लेकर आएगा? Rakhi, yes, what will the ship sink bring? Human anthropogenous, ठीक है, हम भी डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। राम, प्लांट डिकम्पोजिशन टेकन बेटा। प्रियांशु, रेन में क्या आ रहा है बच्चे? अच्छा, ये भी तो यहीं से आया था, ये किस कैटेगरी में जाएगा? द सॉल्ट्स व्हिच आई टोल्ड यू अबाउट मेडिटेरेनियन सी। हाइड्रोजनस, पानी ने ही दे दिया, हाइड्रोजनस, यस। द ओशंस आर 70%, oceans are 70% of the earth's surface, and you've heard of meteors, comets and extraterrestrial objects. Will they fall in this dustbin or not? Cosmogenesis. मधुकर बेटा, इनसाइड अर्थ इंटीरियर, प्लीज फाइंड आउट वेयर व्हिच कैटेगरी इनमें कौन सा आएगा? मधुकर, आपका वाला कौन से में आएगा? यही इसी कैटेगरी में से एक में है। प्लीज फाइंड आउट व्हिच वन इज द वन व्हिच यू आर लुकिंग एट। यस, इंडस्ट्रियल डंप, प्लीज फाइंड आउट व्हिच वन इज इट। एंथ्रोपोजेनियस, ठीक है। मधुकर क्या ग्रेनाइट कर रहा है बच्चे? मधुकर, अर्थ के इंटीरियर में जो भी आएगा लावा से आएगा ना, कहां फंसा हुआ है यार? इज एवरीवन ओके? क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मरीन मिनरल रिसोर्सेज। वुड यू वांट टू टॉक अबाउट सोर्सेज? वुड यू वांट टू टॉक, से दैट दे आर वेरी डाइवर्स बिकॉज दे हैव डाइवर्स सोर्सेज? ट्रू और नॉट? तो ये एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। व्हाई डिड आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ रियल लाइफ व्हिच आई वाज रिमाइंडेड ऑफ? मुझे लगा कि यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट बेटर, वरना बुक्स में यही लिखा होगा, बुक्स में यही सीक्वेंस होगी, यही नाम होंगे, बट व्हाट इज द देन फन ऑफ कमिंग टू अ क्लास? ये टीचर का काम है उन चीजों से रिलेट करना, एबल टू टेक यू देयर, देन ओनली व्हेन वी आर एबल टू अप्रिशिएट दैट। ट्रू और नॉट? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब एक बात बताइए, आपने देखा टोंगा आइलैंड में वोल्केनो बनता है, ठीक है, आपने सुना उस वोल्केनो के ऊपर बहुत सारा ऐश है, एसिड रेन है, वो सारा आसपास पानी में भी गिर रहा है ना? Yes, and all these things they will settle down at the bottom, or stay dissolved in the water. If they settle down at the bottom and they turn into minerals, pretty possible. Yes or no? और मैं तो ये भी कह रहा हूँ, आप एक बात बताइए ना, आयरन कहीं से आया and there is oxygen dissolved, will it turn into Fe2 or 3? If oxygen is less, iron pyrite also. ऐसे कॉपर के साथ सल्फर मिलके कॉपर पायराइट बनेगा। Yes, so sulfur is coming from, say for example, hydrothermal vent. Remember hydrothermal vent, जो आपको बताया था, उसमें sulfur rich water is coming and nearby the ocean bottom rocks are rich in iron. So what will happen? Iron and sulfur will react, iron pyrite will come. So Anirban is saying chemical reaction भी तो contribute करेंगे, बिल्कुल करेंगे। So something which has gone in a particular form is no guarantee that it will remain in that same form, because years of chemical biological processes will transform them. And tell me, when an animal dies, the body will also secrete many chemicals or not? Microorganisms, are they secreting chemicals or not? Degeneration will happen or not? So बहुत सी चीजें बदलेंगी. So be prepared, be real about it. The topics which I teach you, all the things which I have taught you till now, be it land, be it water, be it air, have I taken you there or not? That is the nature of geography. Geography is not just to be mucked up. वहाँ question जो भी आएगा, definitely हमारे पास vocabulary होनी चाहिए. So we must be using that also. Is everyone okay? तो मैं इनको क्लासिफाई करने वाला हूँ. Why do we classify things? जल्दी से बताओ. Why do we classify things? Everyone, why do we classify things? To understand them better, to simplify. Above all, simplify. To like classify उन्हें categories में डाल दिया, retain करने में, think and link and other things. Yes. Who can classify better? A person who's more intelligent or a person who's less intelligent? Classification takes more effort, क्योंकि आप उसमें बहुत सी similarities को देखते हैं. Certain visible similarities, certain invisible similarities, and then you classify them. So एक अच्छा classifier is a person who knows the subject well. Otherwise, so remember, we can classify human beings into male and female, whites and blacks. Yes. और कुछ नहीं आता तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, Jews, Parsis, Jainis, Buddhists, ये भी कर सकते हैं, जो करना करें. चलिए, I think human beings are too complex to be classified on simple parameters. So classification of minerals, marine minerals, has been done as A. This is ocean. This is ocean bed. A is subsurfacial. B, surfacial. C, in solution. And D, water itself is a mineral resource or not? Makes sense?
So D is everywhere. People ask me what diagrams can we draw. बना दिया मैंने diagram, ये book में नहीं है. I just thought of it. मैंने पिछली क्लास में शायद ये नहीं बनाया था. So I make a box and I say A B C D, and for A I will write down, for B I will write down, for C I will write down. Yes or no? Give me an example of a subsurfacial mineral resource, everyone. Subsurfacial mineral resource. Subsurfacial mineral resource in the oceans. Oil, very good. Oil. So हमें oil मिलता है. Give me an example of B, surfacial mineral resource. जो surface पे पड़ा हुआ है. Salt, we just saw salt. Yes or no? Coral reef, limestone, perfect. Give me an example of C. Give me an example of C in solution. So everyone, fish is not the answer. Fish is not dissolved in water. Mineral resource की बात हो रही, जिसने भी fish लिखा है उसमें वापस आ जाए. 90 elements, 90 known elements including iron is dissolved in ocean water. और जितने भी लोगों को ocean water के बारे में नहीं पता है, तो जिस दिन दरिया में जाओ एक बार टेस्ट करके देख लेना. Yes. So people say that ocean water is salty. Is it plain salty? I don't know how many of you tasted sea water. उसमें सब कुछ है, इतना कुछ है, and add to it you and I can remember sewage ultimate taste तो वही दे रहा है. पहला, let's start with subsurfacial. Sheikh Saleh is saying, sir, ocean water is poisonous. Sheikh, you haven't been to the ocean, so what? कभी दरिया में नहीं थे? So ocean water is not poisonous. Ocean water is not poisonous. दुष्यंत, मैंने गलती से ड्रिंक कर लिया था, फिर हॉस्पिटल में था एक दिन. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दुष्यंत. जो कह रहा है दुष्यंत तो किसी लिए हॉस्पिटल जा सकता है, दुष्यंत ही जानता है. दुष्यंत की बातों को मैं सीरियसली बहुत लेता नहीं हूँ. बट आई वांट टू टेल यू, ओशन वाटर हैज अ प्रॉब्लम. ओशन वाटर बिकॉज ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस आपको डिहाइड्रेट कर सकता है. यस, हैव यू हर्ड ऑफ ऑस्मोसिस? हैव यू हर्ड ऑफ ऑस्मोसिस? तो दो सॉल्यूशन, one solution, two solutions. Two solutions are there, A and B. This is water and this is salt water. तो क्या होगा? Water will enter in salt water. yes or no? उसको dilute करने के लिए. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ऐसा सुना? ऑस्मोसिस. ट्रू. तो अगर आपके स्टमक में सी वाटर आ गया तो आपकी बॉडी में जितना भी वाटर है उसको डाइल्यूट करने के लिए उस तरफ जाने लगेगा, तो आप डिहाइड्रेशन से जान दे देंगे. ठीक है, बहुत ज्यादा होगा तो हल्का सा टेस्ट वेस्ट कर लिया, कोई नहीं मर रहा है. ठीक है, ऐसा swallow करने का आपका मन नहीं करेगा, बट इफ इट गोज इन माउथ इट्स एब्सोल्युटली ओके. स्पिट इट आउट, और थोड़ा बहुत अंदर गया तो कोई नुकसान नहीं कर रहा है. इट इज जस्ट दोस एलिमेंट्स व्हाट गोइंग इनसाइड फ्रॉम लोअर. सी बेटा, वाटर इज लोअर, नो. पानी जो है लेस डेंस टू हाई डेंस में, वो उसकी डेंसिटी को इक्वलाइज करने की कोशिश करेगा. सॉल्ट्स नहीं मूव करेंगे, क्या करेगा? पानी मूव करेगा. ऐसे होता है ना ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर पता हो तो. वाटर जो है लेस डेंस है, दिस विल हैपन. फेमस है ना एथिक्स वाली स्टोरी, इफ यू हैव हर्ड दैट. फर्स्ट टाइम mariner or a boy on the boat, the ship had sunk down. Yes, I think I mentioned that story somewhere. You would have heard of that. So sea water पीने से तब आप मर जाएंगे. If you think sea water is going to quench your thirst, वो thirst नहीं quench करता. So everyone, I'm talking about subsurfacial. Yes, sir? True. A1, A2. Do you understand the difference? A1 and A2. A is subsurfacial, but A1 and A2 are two different things. Their mineral resources are different. A1, A2 क्या है? A1 क्या है? Continental margin के reserves. Continental margin can be shelf and slope. Is everyone okay? A2, on the other hand, is deep sea ocean bed. Deep sea ocean bed. ठीक है? तो पहले तो मुझे बताइए, will they be different or not? हाँ, प्रियंक ने कहा सर एक चीज तो है सर, photic and apotic will make things different, but that is in the water ना. That is in the water. But reserves में क्या difference आएगा? तो पहली चीज तो these are life zones. If they are life zones, so fossil यहाँ पर मिलने वाले. Shelf and slope पर fossil fuels मिलेंगे. True or not? Fossil fuels क्या है? Oil and gas, और क्या है? Coal. Coal भी मिलेगा सर, क्यों नहीं मिलेगा? Fossil fuel है तो coal वहाँ पर भी हो सकता है. True or not? ठीक है. उसके बाद if you remember terrigenous material, वो भी तो यहाँ आकर डिपॉजिट हो गया ओवर पीरियड ऑफ टाइम, नीचे भी है. यस, उनके माइंस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? पॉसिबल. सो मेटल्स कैन आल्सो बी देयर. Metals can also be there. Terrigenous mineral reserves, they have come and वो सब surface जाकर नीचे बैठ गए. Possible or not? Now this is metals. मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसमें gravel और cobble नहीं कह रहा हूँ, अंदर subsurface metals like iron, tin, that is also there. Silver continental margin पे हो सकता है, ये भी हो गया. ठीक है. डीप सी में क्या मिलेगा? What will be in deep sea bed? डीप सी के अंदर क्या हो सकता है?
What can be there in deep seas? हाँ, वोल्केनो से आ सकता है, सर वोल्केनो से आ सकता है। तो डॉली, basalt is not a mineral, basalt is a rock. Give me a mineral. ओशन रिजेस के पास, ओशन रिजेस के पास हमारे पास क्या मिल सकता है? हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो उस वजह से दैट एरिया इज रिच इन सल्फर, पॉसिबल। तो कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे सर मेटल मिलेगा, मेटल तो यहाँ भी मिलता है। फिर यहाँ का यूनिक क्या है? जो यहाँ का यूनिक हो, यहाँ पर सल्फर है, ठीक है, सल्फर, चलो मैग्नीशियम, कुछ मेटल भी ले लिया, ठीक है। और मैंने तो कहा कोल भी ले लिया, आपका मन है जब नीचे जा रहे हैं तो कोल भी ले लिया, पॉसिबल हो ना? आज नहीं बना कोल, पुराना कोल है, पॉसिबल हो गया। अब निकालते कैसे? हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट देम? एक तो है बोरिंग, ड्रिल अ होल एंड इन दैट होल थ्रू दैट होल थिंग थ्रू द, दूसरा है माइनिंग। दो तरह से आए। यस नो? So everyone, my question to all of you is, my question to all of you is that A1 and A2, which is a real source? Which is a real source? A1 is a real source. Why? A1 is accessible, definitely. यहाँ पर टेक्नोलॉजी का एक चैलेंज होगा, यहाँ सेफ्टी का भी एक चैलेंज है, कोल भी है, ऑयल भी है। डीप सी माइनिंग, डीप सी ड्रिलिंग इज अ चैलेंज, यहाँ पर इजी। और अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो भी ये बचाना मुश्किल है। डू यू अंडरस्टैंड डीप सी? आई वांट टू टेल यू, one third of world's oil is from offshore sources. Offshore मतलब ये तो कोस्ट हो गया, this is the shore, this is offshore, this is deep sea. So deep sea is difficult. deep sea, remember, maps भी नहीं है, एक्सप्लोरेशन भी तो नहीं है। क्या है उसका एक्सप्लोरेशन? डीप सी में टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट है, डीप सी में कैपिटल कंस्ट्रेंट है, डीप सी में इकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट है, डीप सी में हार्मफुल भी है, ठीक है। अब किसी ने मुझसे पूछा सर ये बोरिंग और माइनिंग में क्या अंतर है? अब ये तो गलत बात है यार, है ना? अब फिर वही वाली बात है, हम अपना माइंड ऑफ करके पढ़ रहे हैं क्लास में। तो घर में ग्राउंड वाटर के लिए बोरिंग होती है कुछ जगह पर। हैव यू हर्ड ऑफ बोरिंग? बोरिंग वेल, बोरवेल, सबने सुना है नहीं सुना? क्या होता है बोरवेल? बोरवेल में क्या होता है? हैंडपंप के लिए बोरिंग करते हैं, एक होल कर देते हैं, टिल यू रीच द मिनरल एंड मिनरल कम्स आउट ऑन इट्स ओन। यही होती है ना बोरिंग, सबने सुनी है। सर बोरिंग हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम माइनिंग? आप बताओ, आपने माइनिंग करी कभी पानी की? पानी की तो माइनिंग नहीं होती। माइनिंग और कुछ नहीं देखा तो स्कूल में तो देखा, कोयले की खदान तो देखी, पिक्चर में तो देखी, तो यू रिमूव एवरीथिंग और फिर माइनिंग होती है। तो अगर हम इतने एब्सेंट माइंडेड हो जाएंगे कि भाई ये बोरिंग और माइनिंग ये बहुत टेक्निकल है, देन तो यू नो लाइक देन इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। भाई KGF देखा, many things we have, that's what I said, no, you want me to treat you as a child who was born half an hour ago, pink in my hand. Many teachers do that also. Yes, I am not. Why should I assume you are, you know, nobody? आपको कुछ अकल नहीं है, आप भी तो यार उम्र हो गई, आपकी भी तो 15-20 साल के बीच की उम्र है या नहीं? When you are in that age group, you have seen what is this. कुछ तो अप्लाई करेगा क्लास में। सर ये डीप सी क्या होता है ये नहीं समझाया। What is the difference between deep sea and ocean bed? करने को तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो क्लास आगे चलेगी। एंड यू नो व्हाट, एंटरटेनिंग टीचर्स वो खूब बताएंगे डीप क्या होता है, सी क्या होता है, आधा घंटा डीप पे, आधा घंटा सी पे, आधा घंटा ओशन पे, आधा घंटा बेड पे, 2 घंटा हो गया, मजा भी बहुत आया, गहराइयां चल रही। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि वो थोड़ा सा होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, कोल निकालना है और ऑयल निकालना है, विच वन विल बी यूज्ड? कोल एंड ऑयल, मेथड कोल एंड ऑयल, which method will be used? Extraction method. Oil is for drill and coal is for mining. True or not? तो ये एक नेचुरल चीज हमें समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो तो हम अपने प्रेजेंट जो हमने सीखा है वो भूल गए, ठीक है। चलिए ठीक है, ये देखो प्रियंका खाली बैठे बैठे एंटरटेनमेंट लेकर आई है। सर सियाल और सीमा को कंसिडर कर सकते हैं क्या इसमें? मेरे ख्याल से तो अब हम सब लिथोस्फीयर पढ़ रहे हैं, अभी भी सियाल और सीमा ही चल रहे हैं। प्रियंका छोड़ दो इससे, जिम्नास्टिक्स हो, आप शुरू से ही सियाल और सीमा में चल रहे हैं। इस ओशन में सियाल है, इसमें सीमा है। You all of us have hair on our head, yes or no? True. So we are having a class on hair on our head. अब आप उसमें लगने सर हेयर में एक थिक हेयर है एक थिन हेयर है, ठीक है सर, हेयर विद मोर कोलेजन लेस कोलेजन, वो बाल की खाल हो जाता है यार। तो मेरे ख्याल से यार बड़ी अच्छी सी बात हो रही है यार, ये लिथोस्फीयर मतलब मजाक बना देते हो पूरी क्लास का, मैं क्या बताऊं यार।
वेरी वेरी सीरियस ऑन दिस, कि नीचे ऑयल है और हमने यहाँ पे ड्रिल कर लिया, ठीक है। कौन सा रॉक है ये? इम्परवियस रॉक, और नीचे भी एक रॉक है, सब कुछ लिथोस्फीयर में ही हो रहा है। और यहाँ से ऑयल के ऊपर प्रेशर है, किस चीज़ का? नेचुरल गैस का। वो इसको बाहर लेकर आ जाता है, पुश कर देता है, ऐसे ऑयल बाहर आता है, इसको ऑयल वेल कहते हैं। हम इसमें सियाल सीमा करना शुरू करें, सर थोड़ा सा ना सर सियाल और सीमा कर लें हम, सर शेल्फ और ओशन बेड, आप यही तो कर रहे हैं प्रियंका, आपको कोई रोक रहा है? मत करिए ना। आपको बता दिया कि लिथोस्फीयर लैंड का भी है और ओशन का भी है, ये लिथोस्फीयर है। मैंने तो कहीं सियाल सीमा नहीं किया, जहाँ से आप कर रही हैं मुझे कुछ नहीं पता है। आप अपने मन से तैयारी करती हैं, अपने मन से ही कर रही हैं, करते रहिए। मैंने कहा ये मेरा कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये मेरी ओशियानिक प्लेट है, ये मेरा आउटर मेंटल है, और ये मिला के बनता है 100 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर। हर बार यही डाउट ला रहे हैं, सर कौन सा सीमा, कौन सा सियाल, और क्यों कर रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहा है। ये भी बता दिया था, पहले ही बताया कि भाई ये सियाल है, ये सीमा आने लगता है तो बीच में उनका सियाल सीमा, इट्स जस्ट अ केमिकल कंपाउंड। हर बार करेंगे बट कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा ना, बिग पिक्चर बहुत कम लोगों को दिखती है, बिग पिक्चर बहुत कम लोगों को दिखती है ना। जिनको बिग पिक्चर दिख जाती है उनकी लाइफ इजी हो जाती है। उसको बना लीजिए जल्दी से। ऑफलाइन क्लासेस इंसिस के बच्चे मैप भी बनाना सीखे हैं एंड बहुत अच्छे से, भाई ये मैप बनाना चाहिए, सही कैसे गलत कैसे। ऑनलाइन में तो मैं वो भी बंद कर चुका हूँ यार, कि अपने मन से करते हैं, करना है करेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे, ज़्यादा बोलोगे तो बुरा मान जाएंगे। तो हम भी अपना उसमें ये मैप बना लीजिए, भाई आपकी मदद करेगा। फाउंडेशन क्लास में मैप बनाना सिखाया था, तो सीख लीजिए। और अगर आपको डाउट है इंडिया मैप में भी, तो सक्सेस.space ये यूट्यूब चैनल 10 मिनट में वो भी सिखा देते हैं। तो इसमें हम ढूंढ रहे हैं ऑयल, ऑयल ऑफ द वर्ल्ड, और ऑफशोर कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स में ऑयल मिलता है। ये ऑयल का रीजन है 1, यही 1 है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड 1। ये हो गया 2, 2 भी मैंने जापान शायद काफी ऊपर बना दिया, सी जापान लग रहा है 1 2। उसके बाद 3, उसके बाद 4 5 6 7 8। अब हम मेजर आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ऑयल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड दिखा रहे हैं, ठीक है। दिस कुड हैव बीन इन दैट आल्सो, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद सियाल सीमा इन दिस। दीज आर इन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन, जो हमारे कॉन्टिनेंट का मार्जिन है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप जिसमें आती है वहां पर कॉन्टिनेंटल मार्जिन ऑफशोर ऑयल। नंबर 1 इज बेरिंग स्ट्रेट। इस एरिया में, अलास्का में, सब में ऑयल है। अब अलास्का वुड बी लैंड, इंडिया में भी मैंने असम नहीं लिखा बिकॉज दैट वुड बी लैंड। तो हम जब ऑयल की बात करें, मेजर ऑयल, मेजर कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑयल ऑफ द वर्ल्ड आपके सामने रखा है मैंने। नंबर 2 यहां पर है सी ऑफ ओखोट्स्क। नंबर 3 इज गल्फ ऑफ मेक्सिको। नंबर 4 नॉर्थ सी, यूरोप का नॉर्थ सी ऑयल में फ्लोट कर रहा है। नंबर 5 इज बेरेंट कारा लैप्टिव, रशिया का आर्कटिक कोस्ट, रशिया का आर्कटिक कोस्ट। तो आप जानते हैं रशिया में बहुत ऑयल ऊपर भी है, सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। 6 हमने देखा पर्शियन गल्फ, सो गल्फ कंट्रीज जो ओपेक कंट्रीज हैं, दोज आर देयर। 7th इज बॉम्बे हाई, बॉम्बे ऑफशोर कर रहा हूँ उसको, बॉम्बे हाई, बसीन, गल्फ ऑफ खंबट उसी में आ जाता है। सर केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी इज देयर, बट मैंने ग्लोबली उसको बहुत इंपॉर्टेंट जगह नहीं दी है। 8th इज, मैंने आपको दिखाया था, इफ यू कुड सी पैसिफिक ओशन में, सी इंडोनेशिया, मलेशिया, एवरीथिंग वाज इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, है ना, अप टू ऑस्ट्रेलिया, ये सारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इंडो मलाय रीजन, ठीक है। तो ये सब तो हुए कॉन्टिनेंटल शेल्फ इधर के। अब एक स्पेशल सी जिसपे आजकल हम देख भी रहे हैं बहुत सारा ऑयल का हमेशा रहता है फाइट, व्हाट इज दिस? कैस्पियन कोस्ट।
कैस्पियन का जो कोस्ट है इसमें ऑयल है, इज एवरीवन ओके? तो कैस्पियन का कोस्ट है एंड देयर इज ऑयल इन दैट. So question is marine mineral resources, and in marine mineral resources we are talking about subsurfacial resources, we are talking about offshore continental margin resources जिनमें oil is very very important. अगर आप मुझसे पूछें कि 90% economic value of offshore minerals, अगर मैं ऑफशोर मिनरल्स की बात करता हूं तो 90% वैल्यू इन्हीं से आती है. वॉल्यूम कुछ और हो सकता है, बट वैल्यू व्हेन इट कम्स टू मनी टर्म्स इट इज दीस रिसोर्सेज. इज एवरीवन ओके? ऐसा ही कुछ हमने एक्सरसाइज इन बायोटिक रिसोर्स फॉर फिशिंग भी किया था. So just to tell you that where would you need a map, how can you bring in a map that is there? Now this place is called X. What is X? A place in Gulf of Mexico. What is X? A place in Gulf of Mexico. अब आप ये भी कह सकते हैं सर हमने सुना वेनेजुएला में ऑयल है. वेनेजुएला में ऑयल है, ऑफशोर नहीं है वो. वेनेजुएला में ऑयल है, होने को तो नाइजीरिया में भी ऑयल है. यस, अल्जीरिया में भी ऑयल है, लीबिया में भी ऑयल है. ऑफशोर की बात कर रहा हूं, ऑफशोर ऑयल. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्टिनेंटल मार्जिन ऑयल रिजर्व्स, ऑयल एंड गैस. इज एवरीवन ओके विद मी ऑन दिस? इज दिस गल्फ ऑफ मेक्सिको. यहाँ पर क्या है? क्यूबा आइलैंड, अदर आइलैंड्स आर देयर. व्हाट लैटिट्यूड इज दिस? 30 degrees. Which is the most disastrous hazard over here? Cyclones. Do we get that? They call them hurricanes. True. So ये पानी है. This is water. This is the ocean bottom. And ocean bottom has what? Oil. Oil. Oil क्या होते हैं? Oil sedimentary basins में होते हैं, rock strata के बीच में होते हैं. नीचे क्या है? Impervious rock. ऊपर क्या है? Impervious rock. बीच में oil फंसा हुआ है. And oil being lighter has a tendency to come up. तो oil यहाँ पर फंसा हुआ है. What is this? This is oil basin. Oil basin. Is everyone okay? अब हमें ये ऑयल निकालना है. अब हमें ये ऑयल निकालना है. So what we do is we bring a drill rig. It's a specialized ship and it has a rig drill on it. ऐसे drill mounted है. उसने क्या किया? होल कर दिया. And through that hole, oil is coming up. Oil is coming up. Oil comes and gets filled up in the tanks of this huge ship. इसके पास बड़ा स्ट्रक्चर है इस रिग को सपोर्ट करने के लिए और इसके पास टैंक्स है. So, इसके टैंक्स में ऑयल भर जाता है. Is everyone okay? When the tanks are full of oil, छोटा ship comes here, a small ship comes over here. Yes, उसको पाइप लगाया जाता है and the oil is transferred to that ship and that goes away. This one remains stationary. समझ में आ गया? ड्रिल रिग का काम कर रहा है, ये काम कर रहा है. हाउ डीप इज दिस? दिस कैन बी वेरी डीप. हमने कहा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है तो 200 मीटर डीप है. ये सुनो. नाउ टेल मी, यू हैव अ नेल. कील है आपके पास, उसको थोड़े से मारना है. देयर इज अ स्मॉल लिटिल कील, small little nail, and you hammer it, and there is a long nail, and you're not very used to hammering the nail. In which chance there is a chance that the nail will bend? Small nail or a big nail when you are hammering it? There is a chance, no? Hammer करते हैं तो bend हो जाता है. Yes or no? And then you have to throw that. So the long one, yes, the long nail can bend. You have to be very careful. बीच में पढ़ना होगा, पहले थोड़ा थोड़ा मारा, and then yes, you have to be careful. Consider this like a nail. पूरा का पूरा एक ड्रिल. And I'm sure some of you would have used drill bits also, electrical drills. Yes, अगर उसको सीधा नहीं रखा तो थोड़ा भी टेढ़ा किया तो the bit breaks. Have you seen that? दीवार में कभी आपके यहाँ some mechanic would have come, he's drilling a hole, and if the drill is slightly tilted, the drill bit, that nail is called drill bit, will break. Yes or no? Drill सीधा रहना चाहिए, move नहीं करना चाहिए. Yes or no? But this is not land. What is this? These are waves. Will the waves move the ship or not? If the ship moves, what will happen? The drill bit will break. Yes or no? तो ये special ships होते हैं, DP vessels, डायनामिकली पोजिशन्ड वेसल्स. कुछ भी हो जाए अपना जाएगा, ये अपना बैलेंस मेंटेन रखें. थोड़ा बहुत हो सकता है बट दे विल मेंटेन एंड द रिग आल्सो विल स्टे लाइक दैट. यस, बट साइक्लोन्स आर साइक्लोन्स. आर दे गोइंग टू रिस्पेक्ट योर डीपी शिप? It will not.
A rig by the name Deep Horizon from the British company British Petroleum was exploring oil from Gulf of Mexico. A cyclone hit and the drill broke. Moment the drill breaks, what happens? पहले तो ऑयल निकलने लगेगा एट द बॉटम. ऑयल विल बी देयर और नॉट. तो जब ड्रिल आपका ब्रेक हो गया तो आपको ऑयल रोकना पड़ेगा. हाउ डू यू स्टॉप दैट स्पिल? हाउ डू यू स्टॉप दैट स्पिल? क्योंकि अब तो होल है, होल में से ऑयल तो आ रहा है ना, ऑयल अपने प्रेशर से बाहर आ रहा है. यस सर. सो ऑल यू टू डू इज सेंड अ डाइवर ओवर देयर. ये डाइवर गया अपने पैर पे और जाकर वहां पर एक प्लग लगाकर आ गया. जैसे ढक्कन होता है ना, प्लग लगा के आ गया, पानी बंद, है ना. कितना इजी है. ऐसे डाइवर को वजह ढक्कन लगाकर आ जाए. इज इट पॉसिबल? मौसम खराब है. They tried, and they failed, and they failed. So much so that a lot of oil got spilled and everything. British Petroleum was fined $2 billion for this. $2 billion is a huge, huge amount. Huge amount. I want to tell you that this is the amount of foreign reserve जो अभी श्रीलंका के पास बचा हुआ है. $2 billion. इतना तो फाइन लग गया था. Do we get that? 2 billion उनके पास है, 4 billion उनकी रिक्वायरमेंट है. They are talking to IMF कि कुछ पैसा दे दो. Here a company was fined $2 billion. That's a huge, huge fine. Do you understand that or not? These accidents happen. This is the technology. We are in the continental shelf. If we go deeper, सोचो deep sea कितना बड़ा challenge होगा. Deep sea mining कैसे करोगे भाई? कैसे करोगे? Big challenge or not? So that is why deep sea drilling and mining is not happening. Though we have the technology, human beings are going further. सौरभ बोला कितना बड़ा फाइन लगेगा. सौरभ फाइन की बात नहीं. It is not about fine. It is the probability of you going wrong is high. At least coasts will have something, some protection. Deeper you go, the more risky it becomes. And should we go all that deep? And remember, mining and drilling and everything, when we are extracting from the earth, every place has a cost benefit analysis. So यहाँ पर cost बहुत high होता है, तो ये बहुत advisable नहीं है. अच्छा, यहाँ पे कोयला है. Even यहाँ पर भी अगर suppose there is coal mine over here, coal mine है, कैसे निकालोगे यार कोयला? Mining में तो you make a big pit and then you go inside it. इधर कैसे करोगे? इधर निकालना बहुत मुश्किल है. So human beings have decided भाई अगर we need coal, so we will take it from land based mines. सी का तो लेना ही नहीं. सी का लेना नहीं, it's dangerous, फालतू का वो भी नहीं. But yes, drilling is possibility. So we have drilling of oil and gas, and we also have drilling in the deep sea happening. Do we get that? और ड्रिल कितना गहरा कर रहे हो कि आपको सियाल सीमा और जो है मेंटल तक पहुंचना है? कुछ नहीं पहुंचना है यार, कुछ नहीं पहुंचना है. जो टॉप का लेयर है, इम्परवियस लेयर, उसे क्रैक करना है एंड द बेसिन विल ओपन फॉर यू. आई होप यू कैन यूज योर इमेजिनेशन. सियाल सीमा का खेल बंद करें. सो कैन वी ब्लास्ट दैट प्लेस सेफली? ये कितना सुंदर है कि सर यहाँ पर ले गए सर, यहाँ पे बम लगा डाला. ठीक है. तो असम में अक्सर ऐसा हो जाता है कि तेल के कुएं में आग लग गई. हैव यू हर्ड ऑफ दैट? रिफाइनरी इन असम कॉट फायर, ऑयल वेल ऑन फायर. ट्रू. अब ये कह रहे हैं सर वो दिवाली का एक पिछला वाला ना सुतली बम लेकर, लेट अस पुट दैट सुतली बम इनसाइड, ऐसे डालेंगे, उससे क्या हो जाएगा? अपने आप बंद हो जाएगा. कैसे भाई? कौन दिमाग लगाते हो? बोले सर इसमें बम लगाते हैं. जैसे टिक 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 यूपीएससी एस्पिरेंट गोस बम लगा के आया, ज्योग्राफी स्टूडेंट आ गया, खुद भी उड़ गया, सब उड़ गया, एंड देन मोर ऑयल इज कमिंग. ये सब उड़ा के आ गया. क्रेटर टर्न्ड इनटू अ कैल्डेरा. क्रेटर, रिमेंबर, क्रेटर टर्न्ड इनटू अ कैल्डेरा. पटाखा लगा के आ गया. हिमांशु इज सेइंग ऐसे एरिया में ना करें जो साइक्लोन प्रोन हो. हिमांशु सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस. ये सुनो, फिर भी पब्लिक करती है. रिस्क तो है ना, टेक्नोलॉजी में रिस्क है नहीं. सर ऐसे ना करें कि स्पेस में जा रहे हैं. सर स्पेस में रिमेंबर, फिर अगर आपका स्पेस क्राफ्ट वहां पे आग लग गया तो फिर वापस कैसे आओगे? नहीं आओगे, उधर ही रहोगे. ट्रू. तो जितने भी लोगों को लग रहा है कि जहां आग लग जाए वहां बम डाल दो, ये खतरनाक लॉजिक जो है आपके पास है ना. सर ऑयल स्पिल को ट्रीट कैसे करते हैं? तो ऑयल स्पिल के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं. अब कैसे करते हैं वैसे तो कुछ स्केल पे डिपेंड करता है, कई बार नहीं भी कर सकते. ट्रू. अगर तेल के कुएं में आग लगे तो आपको क्या करना चाहिए? करते क्या है? तेल के कुएं में आग लगती है, फायर को रोकने के लिए बम नहीं डालते उसमें. वी डोंट पुट अ बॉम्ब इन दैट. वी नो दैट फॉर कंबशन टू हैपन ऑक्सीजन इज नीडेड. इसमें नाइट्रोजन डाल दीजिए, नाइट्रोजन पैडिंग, नाइट्रोजन डाला जाता है. उसके साथ यहाँ पे क्या करिए? पानी डालते रहिए साइड में. किस लिए? कूलिंग, ताकि रीइग्निशन ना हो. ठीक है. आई एम श्योर नाउ दैट आई एम सेइंग नाइट्रोजन पैडिंग, यू विल बी स्मार्ट इनफ टू अप्रिशिएट इट इज नॉट इजी. एक काम कर, हट हट नाइट्रोजन लिख रहा है. अक्षय कुमार, अजय देवगन, दीस पीपल कैन डू दैट. एंड समटाइम्स दे टेक अ हॉर्स आल्सो. दे विल बोरो द हॉर्स व्हिच वो है ना कंगना रनौत का, रानी झांसी वाला, मणिकर्णिका वाला हॉर्स. दे विल टेक दैट हॉर्स एंड ऑन दैट दे विल हैव नाइट्रोजन पैडिंग डन. ओके, ये हो सकता है. और वो अपना लक पहन के आएगा कि दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट दीस आर चैलेंजिंग थिंग्स, वोंट हैपन इजीली. सो इट्स अ वेरी वेरी बिग रिस्क.
रही बात ऑयल स्पिल को कंट्रोल करने की, so oil spill once it has gone, it has spread into everything. So say for example Bhopal gas tragedy and the gas has already mixed in air, you cannot control it. Now it is gone. Get that? छोटे मोटे spills को we can contain them, and there are biological techniques, we call it bio treatment, bio remediation, or there are chemical techniques whereby you can have like some detergent based action on that, but all of them can have natural problems. तो सर कैसे करते हैं कि लगे हाथ पूछ ही लें कैसे करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि दाल में नमक कम है तो थोड़ा एक चुटकी डाल दो, इट इज नॉट इजी. So deep horizon पे पहला तो ये हो गया, it happened. Now the researchers went to check deep horizon पे impact of oil spill on the animals. So आपने oil spill वाली pictures देखी हैं आपने? Oil spill first covers the surface, it stops the oxygen from mixing with water, so the oxygen content of the water goes down. Other species, the birds and everything is covered with oil, so बेचारे उड़ नहीं पाते and everything. So many things happen. और अगर आग लग जाए ऊपर तो मतलब बहुत problem होती है. So anyways, the researchers went over there and they were expecting all biodiversity to be dead. True or not? होल मरीन इकोसिस्टम पूरा तबाह हो गया होगा, वो एक्सपेक्ट करके गए थे, बिकॉज बहुत कुछ हो नहीं सकता उसमें. दीज आर फ्रीक एक्सीडेंट्स. टू देयर सरप्राइज, if they were expecting 100% damage or if they were expecting 80% damage, the damage was only 30%. See nature. That's why I said brainstorming ऐसी चीजें ले आती है जो आपने सोची भी नहीं. अच्छी बात है, बिकॉज जो आप सोच सकते हैं तो आप वही कर सकते हैं. रियलिटी इज लिमिटेड ओनली टू व्हाट यू कैन थिंक. They went there and they found that there were many species जिनको कुछ नहीं हो रहा था, or probably the damage which they expected did not happen. So then they looked at why. So I want to tell you that if you don't drill a hole, oil will not come out. Why? Because the rock on top is what? Impervious. ये आने नहीं देता है. But there are places on the Earth's lithosphere where the rocks are pervious. अगर rock pervious है and the oil is coming up, will it stop or will it automatically come out? So oil वो बिना drill किए हुए भी कुछ जगह पर धीरे धीरे oil ooze out करता है. Those are called oil seeps. Why is it coming out? Because the top lithosphere is not made up of impervious rocks. So oil धीरे धीरे seep out करता रहता है. Gulf of Mexico is one such region where oil seeps are there. मैंने कहा ना यहाँ पे बहुत सारा ऑयल है, ऑयल तो है ही, और वो ऑयल खुद भी निकलता रहता है. So can I say the oil content normally is high in the water? If oil content is high in the water, tell me, will the species be adapted or not? Already adapted. So the species which were already adapted when the oil spill happens, will they be destroyed to the extent which you thought or less? This is why it was less. So the species is used to one large everyday evening, one large on the rocks. ठीक है, एक पैग लगाते थे रोज. Because of the spill, large क्या मतलब आधा पावर सब मिलके फुल बॉटल आ गई. फुल मंथ एवरी डे फुल बॉटल डाउन. थोड़ा नशे में मरा कोई नहीं, पार्टी चल रही थी. That does not mean that oil spill is a good thing. That does not mean oil spill is a good thing. It is just that the species were resilient. बेचारों की हालत तो बहुत बुरी थी, but they did not die. Do we get that? तो ये थोड़ा ऑयल के बारे में हुआ. और जहां आग लगे वहां बम मत मारो. मतलब ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि सर मेरी तैयारी तो हो ही नहीं रही थी यूपीएससी की, मैंने सोचा एग्जामिनर को 2 थप्पड़ मार देता हूँ. True. You went to write the prelims, you were not prepared, it was not going well. They said the controller of examiner is coming. The moment he came close to your desk, you stood up, your shoe, his head. Get that? हिमांशु is saying famous हो जाऊंगा. फेमस तो पता नहीं, हिमांशु बैंड फ्रॉम यूपीएससी हो जाएगा. है ना? जूता तुम्हारा सिर उनका. क्यों सर? मैंने सोचा वैसे कुछ नहीं, बम मार देता. ट्रू और नॉट? या फिर तुम अपना पूरा फना लेके गए थे, पूरी पॉकेट्स में ही came and like from your pockets one by one everything came out. Endogenetic, exogenetic, yes, coastal landforms, Ebolian landforms, all those things, and then suddenly from here came out the Bear Act Constitution. Yes, इधर रखा था ancient, इधर medieval रख के गया था, पीछे कंधे पर रख के गया था science and tech, सब निकल आया. तो उसे बॉम्ब कहते हैं. बॉम्ब मतलब वो एक आईपीएस था ना, कान में बॉम्ब रख के एग्जाम दे रहा था, हेडफोन, वो भी बॉम्ब लेके चला गया था. So don't do such things. These are, there is fire and you think bomb will do something. Bomb will just kill the whole prospect of you going well. सभी लोगों को वर्ल्ड का ऑयल भी समझ में आ गया, कहाँ कहाँ पर है. ऑफशोर ऑयल, थोड़ा सा ऑयल के बारे में समझ में आ गया. हाउ डज इट कम? यस, एंड सम ऑयल पोल्यूशन, बिकॉज रिमेंबर वी हैव अ टॉपिक ऑफ मरीन पोल्यूशन आल्सो. सो व्हाटएवर आई एम टॉकिंग वहां से आप रिलेट कर सकते हैं. ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए था कि ऐसे हो जाएगा और नीचे पहुंच जाएगा. इट इज अ टेक्निकल थिंग टू प्लग अ लीक. एंड आई वांट टू टेल यू, द डीपर यू गो द मोर डेंजरस इट इज. एंड आई आल्सो वांट टू टेल यू, लेटेस्ट व्हिच आई वांट टू टेल यू इज, रिमेंबर शेल्फ इज 200 मीटर डीप. तो हमारा ऑफशोर ड्रिलिंग कितना डीप होना चाहिए? 200. यू नो वी फूल्स are drilling up to a depth of 1500 meter already. हम भी कम नहीं, एकदम सरफरोशी की तमन्ना अपने हाथ में भी. So please be okay with that. Don't think कि सर ने पढ़ाया था डीप में जाएंगे तो बहुत खतरा है, सचिन सर ने मना किया था. मेरे मना करने से कुछ नहीं होता. True. और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कर लिया, और स्ट्रॉन्ग थिंग्स हैव कम एंड वी आर गोइंग इनटू दिस. कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. Bigger dams cause bigger damages. True or not? So we must be ready for bigger damages. That's what we are talking about. Everyone with me on this?
तो क्या मैं मिनरल रिसोर्स कर दूं खत्म? मिनरल समझ में आ गया? मोस्टली ऑफशोर जाएंगे, नीचे के मेटल्स हैं, मेटल्स को हम ज्यादा नहीं जा रहे हो, माइनिंग की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान किस तरफ है? वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स माइनिंग, वी आर गोइंग मोर टुवर्ड्स ड्रिलिंग। व्हाई? बिकॉज़ ड्रिलिंग इज पॉसिबल, माइनिंग इज भाई बड़ा चैलेंजिंग। इज एवरीवन विद मी ऑन दिस? एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। उसके बाद कौन से आ रहे हैं? सरफेशियल रिसोर्स। सरफेशियल के बाद आ गया सब सरफेशियल। तो फिर से वही करते हैं, just to keep things in perspective so that you can visualize also मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर जाऊंगा। मुझे बताइए क्या पड़ा हुआ है इधर? What is kept over here? What is kept over here? Sediments. Which sediments? Which sediments? So terrigenous. Okay. Can I call them graded terrigenous? Can I call them graded terrigenous? What is graded? समझ में आ गया graded क्या होता है? What is graded? हाँ, coarse to fine. Towards the coast coarse होंगे, फिर धीरे धीरे आगे जाते हुए fine हो जाएंगे, ये सब। तो यहाँ पर क्या होगा? gravel, है ना? उसके बाद sand, silt, mud, clay. Make sense? अच्छा, यहीं पर सैंड में आपको कॉरल भी मिल जाएंगे, कैल्शियम, शिंगल्स। प्रॉब्लम ये है कि आपने कभी सी कोस्ट देखा ही नहीं। ओशन कोस्ट में आप जाएंगे, मिट्टी एक हाथ में लेंगे, यू विल फाइंड मेनी शेल्स। यस, सैंड भी होगा, शेल भी होगा, कॉरल, शिंगल, कॉरल, सारी चीजें मिलती हैं उसमें। लोग इकट्ठा करके लाते हैं, शंकर सीपी करके लाते हैं कि नहीं? और मोदी जी तो वहाँ पे बीच की क्लीनिंग भी कर देते हैं। मतलब रेवोल्यूशनरी पीपल गए तो साफ भी कराए। ट्रू। तो आपको मौका मिले तो थोड़ी ज्योग्राफी भी करना, थोड़ी क्लीनिंग भी करना। सो दैट इज व्हाट वी टॉकिंग अबाउट। अच्छा, किस लिए यूज होगा? हाँ बिल्कुल, प्लास्टिक हटा देना मधुकर। यूज हो सकता है। आपने सुना सैंड माइनिंग बिग प्रॉब्लम? आप गोवा में चले जाइए, बहुत से घर कोरल से बने। हर जगह पे ना रॉ मटेरियल फॉर द हाउस आर जनरली फ्रॉम द रॉक्स नियर बाय। कोस्टल एरियाज विल फाइंड हाउसेस विल यूज कोरल रीफ्स फॉर कंस्ट्रक्शन। राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान में यूल सी स्टोन भी यूज, कोटा स्टोन एंड ऑल दैट। होता है नहीं होता? तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, ठीक है। उसके अलावा आपने प्लेसर डिपॉजिट सुना है? रिवर्स के साथ आता है। जो मेरे इंडियन ज्योग्राफी क्लास कर रहे हैं जीएस में, कौन से वाले की बात की थी अभी हमने? जल्दी से बताइए। मोनाजाइट कहां पर है? थोरियम है ना? मलाबार सैंड्स, ऐसा है। और अगर आपको याद हो, मैंने अभी हाल ही में बताया था एमआईटी, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यहाँ पर क्या है? टिन प्लेसर डिपॉजिट्स, एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, एमआईटी, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ठीक। न्यूक्लियर फ्यूल्स मिल रहे हैं। अच्छा, रूटाइल एक और है, टाइटेनियम, रस्ट प्रूफ मेटल, टाइटेनियम। अच्छा, प्लेसर डिपॉजिट्स हो गए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, ए बी। अच्छा, did you hear of fertilizers? Too much of fertilizer going into the waters, what do they call? Too much of fertilizer going into the water क्या cause करता है, जल्दी बताओ। यूट्रोफिकेशन, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। यूट्रोफिकेशन से फाइनली वो ओशन में पहुंचता है। फाइनली वो कहां पर पहुंचता है? ओशन वाटर बॉडीज में पहुंच जाता है, पहुंच गया। उसके बाद क्या करेगा? ओशन वाटर में पहुंचने के बाद वो वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा एज फॉस्फेट, एज कैल्साइट। सॉल्ट्स भी तो हो सकते हैं ना, वो सब ठीक है। यूट्रोफिकेशन हो गया, वाटर बॉडी में पहुंच गया, ओशन में। ओशन में जाकर वो नीचे बैठेगा, फाइनली तो बैठेगा ना, कहीं तो पहुंचेगा। वो यूट्रोफिकेशन पे मत फंसो, यूट्रोफिकेशन इज ओवर। आई वाज जस्ट लुकिंग एट फॉस्फेट, मिनरल्स आर कमिंग, कैल्साइट्स आर कमिंग, नाइट्रेट्स आर कमिंग। ये फाइनली जाके ओशन बॉटम में बैठ जाएंगे कि नहीं? तो क्या हम उससे रिसोर्सेज निकाल सकते हैं कि नहीं? मैं तो मिनरल की बात कर रहा हूँ। सरफेशियल फ्रॉम द B1, यहाँ पर क्या है? B2। इज एवरीवन ओके विद B1? समझ में आ गया? बिकॉज क्वेश्चन विल बी आस्किंग यू अबाउट द रिजर्व्स, तो आपके लिए, सो दैट यू कैन क्रिएट मोर आइडियाज, आई हैव डिवाइडेड द होल थिंग इनटू हाउ, व्हाट आर द सोर्सेज। The sources can be from the land, from the water in solution and all those things we are looking at, and उसमें भी हमने सब surfacial कर लिया है। Now we are coming towards surfacial. Is everyone okay with this? Can I say B2 is deep sea surfacial? Deep sea surfacial. तो पहली बात तो डीप सी में जाना मुश्किल, एज आई टोल्ड यू, वन। सेकंड थिंग इज डीप सी में वी वर एक्सपेक्टिंग सेडिमेंट्स टू बी देयर, यू नो, बिलियंस ऑफ ईयर्स सेडिमेंट्स टू बी देयर। जब हम गए उधर, सो वी फाउंड गोल्फ बॉल साइज्ड नोड्यूल्स। नोड्यूल्स क्या होते हैं? मोती। गोल्फ बॉल साइज्ड नोड्यूल, ठीक है। सेडिमेंट्स में दबे हुए होंगे या ऐसे पड़े होंगे? विल दे बी बेरिड इन द सेडिमेंट्स, वी मूव देम, और विल दे बी लाइक दिस? कोई रख के गया ऐसे लड्डू टाइप, है ना, छोटा भीम का लड्डू रख के गया,
So everybody is saying very to our surprise we found that they were very crystal clear shining ऐसे modules पड़े हुए अंदर, विश्वास नहीं हुआ. How is it possible? And obviously when you found them तो देखा जाए पहले तो ये किसी का अंडा तो नहीं, check किया nodule, so they were made of metals, polymetallic nodules. And poly is many metals. Iron 15%, manganese 15%, cobalt, nickel, copper, which are deficient in Earth's crust. वो इधर माल मिल रहा है यार. We were very happy. Amazing. इनको बोला गया polymetallic nodules. And we were surprised that how is it that even the sediments are not covering them. तो वहाँ पर हमने देखा microorganisms, they are living in symbiotic association. Microorganisms are also living over there. उसको clean भी कर रहे हैं. Nature's wonders यार. Polymetallic nodules. चेक करवाया गया भाई, पता करो कहाँ पर है. तो पाया गया कि यार ये इंडियन ओशन, सेंट्रल इंडियन ओशन में है. सेंट्रल इंडियन ओशन, बहुत बढ़िया है. खजाना, ट्रू और नॉट? आई थिंक सागर मंथन के टाइम में कुछ नीचे भी गिरा हो. माल वही है. सो लॉजिकल किसको मिलना चाहिए माल? श्रीलंका को, इंडिया को? श्रीलंका इज रावण, वी आर राम, अपने को मिलेगा. सो वी वेंट टू द पर्सन हु गिव्स लाइसेंस. जल्दी बताओ. ISA इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी. वी प्रेजेंटेड देम अ कॉपी ऑफ भगवद गीता, रामायण. यस, इसे पढ़ो, अच्छा लगेगा आपको. वैल्यू सिस्टम, दैट विल बी गुड फॉर यू. एंड कोई डाउट हो तो पे विजिट टू इंडिया. इंडिया में बहुत से लोग आपको मदद करेंगे इसमें. हाँ, तो अपने को ना माल मिल रहा है ओशन बॉटम में, ऐसा हमें पता लग रहा है. वी वांट टू माइन देम, प्लीज गिव अस द लाइसेंस. ISA ने कहा ओके, वेरी गुड, कर लेंगे आप. हाँ बिल्कुल कर लेंगे. और हमें लाइसेंस दे दिया. तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू गेट लाइसेंसेस फॉर पॉलीमेटालिक नोड्यूल इन दैट. ठीक है. बट यू नो मेनी पीपल फिल अप यूपीएससी फॉर्म, पीटी देने नहीं जाते. लाइसेंस अपने पास है, फिर हम सो गए, निकाल ही नहीं पाए. We have the license, but the fact is technology is a big constraint. ऐसा नहीं है कि भेजा सकते सब लोग करते हुए और उठा के ले आए, ऐसा ना. टेक्नोलॉजी इज अ कंस्ट्रेंट. तो आपने सुना होगा सागर संपदा के नाम पे एंड ऑल दोस थिंग्स. सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट वी आर हैविंग आवर डीप सी रिसोर्सेज, दे आर वेरी मच विद इन इंडियाज दिस थिंग. और ये हमारे पास सरफेशियल नोड्यूल्स के रूप में मौजूद हैं. दे हैव मेटल्स व्हिच आर जनरली नॉट फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एरियाज, एंड द मोर इंडिया डेवलप्स इट द बेटर इट इज. ठीक है सर. अगर वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में आ गया तो क्या है? अगर वर्ल्ड में पूछ लिया तब क्या करोगे? पेपर 1 में तो याद है गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसके इधर है सी बेड में, यहाँ पर बहुत सारे पीएमएन पड़े. पीएमएन क्या है? पॉलीमेटालिक नोड्यूल. ठीक है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल. सो पैसिफिक ओशन में इस एरिया में बहुत सारे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स पाए गए हैं. ISA has allotted license to 12 countries to exploit this. This is called CCZ, Clarion Clipperton Zone. India was one of the first countries to get a license for polymetallic nodule exploitation in Indian Ocean. हम पहली countries में से थे. Now we are saying 12 countries of the Pacific coast have been given this license because they went over there and they said कि भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी, हम कर लेंगे polymetallic nodules. ठीक है. So India भी अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? आप भी तो बहुत सारे फॉर्म भरते हैं. Indians are so fond of filling forms. I'm sure when you did your 12th standard, तुमसे ज्यादा तुम्हारे घर वालों ने फॉर्म भरे होंगे. और भरने के बाद कईयों में सरप्राइज किया होगा, अरे दे दे मेरे लिए दे दे, पैसा लगाया फॉर्म भरा है. ये सुनो, एंड यू वंडरिंग क्यों करवा रहे हैं. एक तरफ फॉर्म भरा है मेडिकल का, डॉक्टर बनेगा, दूसरा नर्सिंग भी लगा रखा है. क्यों? डॉक्टर नहीं बने, नर्स तो बने, कुछ तो बनेगा. दे, दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग. अबे हैव फेथ इन मी, हैव फेथ इन मी. अगर डॉक्टर जाते डॉक्टर ही करो ना यार. इंजीनियरिंग भी भर रखा है, ITI भी भर रखा है, कुछ तो करेगा. अच्छा काम करो, और कुछ नहीं, होटल मैनेजमेंट भर रखा है, डू समथिंग. कुछ ही बोल रहे हैं सर CCZ की फुल फॉर्म. बेटा लिखा वहाँ पे क्लैरियन क्लिपर्टन जोन, क्लैरियन क्लिपर्टन जोन. सौरभ कह रहे हैं नो सर मेरे साथ ऐसा हुआ. क्या हुआ सौरभ? मुझे पता नहीं हुआ. मैं तो ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ सौरभ, मैं किसी की बात थोड़ी कर रहा हूँ. मैं तो जनरली कह रहा हूँ कि बहुत से पेरेंट्स में बहुत सारे फॉर्म भरते हैं. अगर आपके पेरेंट्स ने बहुत सारे फॉर्म भरे तो यस बता दीजिए. वो तो और तो कुछ नहीं. अभी थोड़ी पूछा कौन कौन सा भरा है. अभी भी कहते हैं PCS का दे डालो, है ना. बहुत सारे पेरेंट्स ने भरा. तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इंडिया ने भी अप्लाई किया और इंडिया को भी लाइसेंस भी मिला. अपना तो निकाल नहीं पा रहे, हमारे पास पैसिफिक का भी लाइसेंस है. ये सुनो, टेंशन बहुत है अपना. फ्रेंड्स जहाँ हो जाएगा चले जाना बेटा, कोई दिक्कत नहीं. एंड द लॉजिक इज बच्चा कंफ्यूज है, अब क्या करें, सारे फॉर्म भर देते हैं. साइंस स्टूडेंट है, उसका बेचारे का कंपनी सेक्रेटरी का फॉर्म भी भर रहा है, CA का भी भर रहा है. ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज में किसी कोर्स में हो जाए तेरा, कुछ हो जाए भाई, उधर ही जाना है तो कुछ तो कर ले. मॉर्निंग में हो जाए, इवनिंग में हो जाए. हाँ, लड़कियों का BEd भी भर दो बेटा. डॉली किसकी प्रिपरेशन कर रहे बेटा? तू सब कर लेगा, क्या दिक्कत है? मैथ्स इंग्लिश ही तो आना है. रट सवाल कर. परसेंटेज लाल मेरे, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन. सारा देश रेशियो प्रोपोर्शन पे चल रहा है. एंड दे क्लियर्ड एन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, एंड टुडे दे थिंक दे आर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. दे आर लाइक नासा के बाद वही आते हैं. अभी RS अग्रवाल पे लाइफ चल रही तुम्हारी. चलो बैंकिंग के कुछ सवाल किए हैं, नेक्स्ट इज नासा. ये सुनो सर, मैं फॉरेन से पढ़ के आया हूँ सर, मेरा ना मैंने ये वाला एग्जाम निकाला, मैथ्स ही तो दिया था, मैथ्स आता है, उसके अलावा लाइफ स्किल 0 है. तुम तो UPSC कर रहे हो, कोई भी एग्जाम निकाल दोगे, सबका पैटर्न अलग है, कैसे समझाएंगे लोग.
वही ना, और कई बार तो हम यूपीएससी कर भी नहीं रहे होते, यूपीएससी भी पहले उन्होंने नहीं करवाया, उसके बाद तू तो यूपीएससी कर रहा है, तू तो सब कर सकता है। यस, अंतर्यामी हो जाते हो। हमारे माँ बाप हमसे क्या क्या उम्मीदें करते हैं, सुनो। एंड देन दैट इज व्हाई यू नो लाइक एकता कपूर इज क्रिएटिंग ऑल दोस थिंग्स। जो भी चाहो हो सकता है। सो उधर तुम एग्जाम दे रहे हो, तुमको कुछ नहीं आता है, यू डोंट नो एनीथिंग ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड हियर द मदर इन एकता कपूर सीरियल माँ सरस्वती की आराधना कर रही है, 20 दिन से खाना पानी नहीं लिया है, मेरा बेटा पास होगा 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 होगा, एंड देन तुमको कुछ नहीं आता है, सडनली यू नो लाइक अ मैजिकल इलेक्ट्रिक रे एंटर्स योर बॉडी एंड ऑटोमेटिकली ओएमआर शीट चलने लगता है, यू आर द टॉपर, एंड देन आफ्टर दैट मम्मा सेज ये भी बन गया मेरा, ट्रू। और फिर आप टीचर से क्या उम्मीद करते हो, सर वाला फॉर्मूला बता दो बस, ये सुनो। हाँ, मम्मी के पास और कोई काम नहीं है ना, तो ये एकता कपूर देख रही हूँ। अब डोंट टेल मी सचिन सर ने ऐसे कह दिया मम्मी के पास और कोई काम नहीं है, एकता कपूर देख रही है। आई एम सेइंग इट्स गॉन इन द कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ एवरीवन। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कर ही लोगे जब भी, एग्जैक्टली। सो एनीवे, पॉलीमेटालिक नोडुल हो गया। एक जगह पर हमने पाया कि कोबाल्ट बहुत है, ऐसा ना, अ लेयर ऑफ कोबाल्ट इज देयर, इसको बोलते हैं कोबाल्ट क्रस्ट। क्या बोलते हैं? कोबाल्ट क्रस्ट। अच्छा ये क्या है, जल्दी से बताइए मुझे, व्हाट आर दीज एट द बॉटम? हाइड्रोथर्मल वेंट, अच्छा, दे आर रिच इन सल्फर, सल्फर एंड मेटल्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, सल्फर एंड मेटल्स, उसको बोलते हैं मेटल सल्फाइड। तो लिखूं क्या है, तो कचरा हो गया डायग्राम, लिस्ट बना लो यार, B1 की लिस्ट ये, B2 की लिस्ट ये। डीप सी सरफेशियल आर कोबाल्ट क्रस्ट, पॉलीमेटालिक नोड्यूल, मेटल सल्फाइड्स, डू वी गेट दैट? कोबाल्ट क्रस्ट, मेटल सल्फाइड्स, पॉलीमेटालिक नोड्यूल, और जो यहाँ के सेडिमेंट्स है ना, जो नीचे जो सेडिमेंट्स हैं स्पेशल, they might be rich in many substances, those are called abyssal clays। क्या बोलते हैं उनको? abyssal clay। They are also rich in minerals। 4 things given to you: polymetallic nodule, cobalt crust, abyssal clay, yes, metal sulfides, and world example also given to you। कर लोगे question? True। What is the topic? वापस जा रहा हूँ। If a question comes, everyone please pay attention। If a question comes, examine the mineral resources of the ocean। Everyone please stop। Examine the mineral resources of the ocean। आंसर बता रहा हूँ, 60%, 30%, 5%, 5%। कर लोगे? 60 and 30 का मसाला है 200 words। 200 words का मतलब 120 words इधर, 60 words इधर, plus diagrams and math। Do we have it or not? Some of you sitting in the class are always under the fear, Sachin sir is explaining, I am understanding, but in the exam will I have sufficient content or not? Have I told you the glimpse also कम नहीं पड़ेगा? That is why I am telling you। I want to take away your fear, I want to give you that confidence that easy है, हम कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। Is everyone okay with this? इन सॉल्यूशन का क्या करना है? इन सॉल्यूशन की एक ही लाइन लिखनी है, 94 naturally occurring elements, 94 naturally occurring elements and 47 different types of salts। मैंने हाफ हाफ कर दिया, 47 into 2 is 94 होता है। They are found dissolved in oceans। सॉल्ट के एग्जांपल दे देना। सॉल्ट के एग्जांपल क्या है? मोस्टली तो सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वरना कैल्शियम के भी सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, और मैग्नीशियम के भी सॉल्ट होते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के सॉल्ट लिख देना, 94 एलिमेंट्स में जो आपका मन आए, नहीं तो गोल्ड लिख देना, दे आर देयर। द ओनली प्रॉब्लम इज वेरी dilute। नंबर 1। दूसरा चीज, कैन यू से दैट डिपेंडिंग अपॉन local factors the solution composition might change। true। ट्रॉपिकल एरिया में जिसमें इवेपोरेशन ज्यादा है तो उसमें सॉल्ट ज्यादा हो जाएंगे, ट्रू और नॉट? इफ देयर इज अ रिवर व्हिच इज ब्रिंगिंग सर्टेन थिंग्स फ्लोइंग थ्रू सर्टेन एरियाज, वहां पर चेंज हो जाएगा। आई जस्ट सेड 5% ऑफ 120 वर्ड्स कितना होता है, और 200 वर्ड्स इज 10 वर्ड लिखने, 10 वर्ड्स यू हैव टू राइट। 2 सेंटेंस के लिए मसाला दे दिया नहीं दे दिया? enough। You can bring in examples also, and I am sure you are not foolish enough to see what I am saying is plus plus plus, it is not that mechanical। I'm just giving you that ideas हैं, उधर आप खेल सकते हैं, ठीक है? Is water a resource in itself? Water is for drinking, but for that what would you need? Desalinization। true or not? अच्छा, आपने आजकल हाइड्रोजन एज अ फ्यूल की बात सुनी? हाइड्रोजन मिशन, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, वहां पे तो काम आ सकता है? आ सकता है नहीं आ सकता? आ सकता है।
जी सर, रॉकेट में सिर्फ रॉकेट की बात हो रही है। इंडिया में जो हाइड्रोजन मिशन हो रहा है वो रॉकेट चलाने के लिए हो रहा है। ये तो बहुत खतरनाक कर रहे हो। रॉकेट बॉयज क्या देख लिया तुमने, हर चीज में रॉकेट ही लगा रहे हो। मोदी जी हाइड्रोजन मिशन कर रहे हैं, तुम जो है रॉकेट लगा रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो तुम बिल्कुल। यस, बिल्कुल एज अ फ्यूल। अभी मनशा ने लगे हाथ बोला सर टाइडल एनर्जी भी, बेटा मिनरल की बात हो रही है, एनर्जी की बात नहीं हो रही है, ध्यान दो। आपको पता है H2O कभी कभी D2O भी होता है। D2O क्या होता है सर? ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है सर। वो देखो हार्ड वाटर, सर ये आइसोटोप है। हार्ड वाटर होता है सॉल्ट से बच्चे, हेवी वाटर। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है कूलेंट की तरह। हेवी वाटर होता है नहीं। इज इट अ रिसोर्स और नॉट? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, सम ऑफ देम कैन बी अ रिसोर्स। मुझे तो 2 सेंटेंस लिखने मिल गया या नहीं मेरा काम, जल्दी से बताइए। डिड इट हैपन और नॉट? दैट्स ऑल आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड। कल क्या किया था? बायोटिक रिसोर्स। अभी क्या किया है? मिनरल रिसोर्स। कर लेंगे दोनों पे। यू हैव सफिशिएंट कंटेंट, यू हैव मैप्स, यू हैव व्यूज, यू हैव आइडियाज। व्हाट विल बी नीडेड? ब्रेनस्टॉर्मिंग रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, गिव करंट एग्जांपल्स, गिव स्पेशल एग्जांपल, ड्रॉ मैप, जॉब विल बी डन। अब इसी में क्या होता है, एक टीचर आता है वो डिक्टेट करता है, चलो बच्चों आंसर लिखेंगे, इसका इंट्रो ये रहेगा, इसकी बॉडी ये रहेगी, इसका कंक्लूजन ये रहेगा, ठीक है, टॉपिक खत्म। नाउ इफ द क्वेश्चन कम्स इन अ डिफरेंट वे, स्टूडेंट क्या सोचता है? सर ने कहा था इसी से पास होते हैं, लिख दे, एग्जामिनर समझेगा। दैट वाज हैपनिंग इन योर यूनिवर्सिटीज, that he was supposed to write something and it was his job to find out where the answer is. Now there is a specific question, you should be able to craft that answer. So पहला चीज क्या करेंगे? ब्रेनस्टॉर्मिंग। then all the things which I told you, do we have subsurfacial के लिए बहुत है, बहुत सारी बातें की। विद डायग्राम कराया यार, विद डायग्राम कैन यू राइट इन योर ओन वर्ड्स। मैप भी है, प्लेसेस भी हैं, 60% उसमें जाना है। do we get that? ये डीप वाला आ गया। then we went for surfacial, coastal areas, graded terrigenous construction material, placer deposits, metals, nuclear material, and then those salts, phosphate, calcite, nitrate, सब कुछ आ गया। मैप भी है, सारे फॉर्म्स भी हैं, डायग्राम भी है, अच्छे से बनाओ। ये क्या बुक में बना हुआ? नहीं, मैंने खुद बनाया, आई एम टीचिंग यू, आई एम मेकिंग इट। सरफेशियल हो जाएगा। एंड देन वी हैव छोटा छोटा अबाउट द वाटर इटसेल्फ एंड द सॉल्ट, ठीक है। सो एवरीवन, 2 minutes break. After this we go into energy resources. Is it okay? Quickly we'll go into energy resources. If you have doubts you can ask on whatever we have done till now, वो भी पूछ सकते हैं।
Is everyone back? Comfortable? Let me switch on the PC. Okay, so we're talking about energy resources. So what are the energy resources? जल्दी से brainstorm करेंगे. Ocean में energy resources. Quickly. Tidal, okay. Wave. Thermal. Thermal क्या होता है? मेगा? What is thermal? Ocean thermal. Okay, geothermal. Very good. Windmill. Okay, thank you. Top layer temperature more than bottom layer. Good. So I have a problem with this area, this question. Let me share my problem. Maybe that will help put things into perspective. My first issue with this is that if I talk about wave energy, if I talk about tidal energy, if I talk about geothermal energy, there is not much to talk about. ज़्यादा काम नहीं हुआ. One sentence, two sentences, and something. I'm also preparing you for the exam. No, I'm also preparing you for the exam. So the problem is that if we just write one or two sentences, the problem हो जाएगा. I want to save my life. I want to really give a good answer to energy resources. So for that, I will divide them into conventional energy sources and non-conventional energy sources. And the good thing is, congratulations, conventional तो पहले हो चुका है. Coal, oil and natural gas, nuclear fuels. Coal where? Only coastal mines. So first of all, we said that we are not going to mine coal in the oceans. Not interested. We are interested only in drilling. ये बात कर चुके हम. Do we have sufficient material for this? Yes or no? Can I say मेरे आंसर में 40% oil और इसको डालूंगा 2% और 1 sentence, 2% और 1 sentence. Make sense? अभी मैंने क्या बात किया था? मोनाजाइट, इल्मेनाइट, कुछ और हैं. कहाँ पर हैं? प्लेसर डिपॉजिट्स. Is everyone okay? आधा आंसर तो इसमें निकालो ना. Half the answer, let it go in this. Why not? 2% को 2 to 5% ले लो यार. 5% is a sentence, no? Give 50% answer from here what you have done in mineral, because that was energy minerals, no? A smart student will give it a thought that ways also कि भाई जो भी पढ़ा है वो भी तो यूज हो रहा है. True. I told you by value 90% of the monetary value of the offshore reserves is by oil and gas. तो करिए. You have the map and everything ready. अब इसमें we should be definitely talking about based on kinetic energy of flowing water. वो क्या है? Wave energy, tidal energy, wave energy, tidal energy, ocean currents, geothermal energy, and biomass energy. Now tell me, if a question comes on energy resources, is this a good framework to answer it? Half the answer is already prepared. Can we play with half the answer? Now we are looking at the non-conventional one. Based on kinetic energy of flowing water, wave, tide, ocean currents are there. अच्छा, ocean currents में मैं अभी भी बताना चाहता हूँ कि ocean currents की अभी तक हमारे पास no technology, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि ocean currents से हम ज़्यादा कुछ निकाल पाएं. Though we have something called as OTEC. OTEC. What is OTEC? Ocean Thermal Energy Conversion. Waves की energy जो है nascent stage of research. Wave energy हमारे पास आ गई. Wave से we are able to extract energy, but even that is in nascent stage. Nascent means formative stages. We are not on top of things in this. Is everyone okay? Starting में, developing में.
टाइडल में प्रॉब्लम है, टाइडल में प्रॉब्लम है, इट हैज गॉट लिमिटेशंस। ये सब चीजें मैं अब आपको बताने वाला हूँ। So if anyone is making notes for energy resources, marine energy resources, आपका आंसर इस पूरे वर्ल्ड में से कहीं कैप्चर करना होगा। You'll have to go 50% in this and 50% in this. True? अब वेव की एनर्जी कैसे हम वो कर सकते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। एक बात बताइए मुझे, हाउ डू वी यूज हाइडल एनर्जी? हाइडल एनर्जी सुना, हाउ डू वी यूज इट? एक डैम होता है, लॉट ऑफ वाटर इज कमिंग, तो उससे क्या करते, क्या हम इतना सारा पानी गिर रहा है, क्या करेंगे डैम से? सर आगे टरबाइन होता है सर। ये सुनो, ऐसे सुना है नहीं सुना? टरबाइन रोटेट होगा, यस द टरबाइन विल रोटेट। तो टरबाइन से हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट पोटेंशियल इनटू एनर्जी। ओके, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। टरबाइन रोटेट, रोटेटिंग टरबाइन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं? तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डायनेमो से, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इफ अ कॉइल इज मेड टू रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कुछ है, यस, अ कॉइल रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल हैपन, करंट विल बी जनरेटेड, ऐसे कुछ है नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। अब ये तो हो गया, मतलब हम वेव्स का क्या करें? वेव्स में एक प्रॉब्लम है, वेव आती है तो मारती है, लेकिन वेव वापस भी चली जाती है। इफ वेव वाज कमिंग इन वन वे तो टर्बाइंस विल बी रोटेटेड, यस और नो, बट वेव विल कम एंड हिट द कोस्ट एंड इट विल गो बैक आल्सो, नॉन कंटीन्यूअस, बिग प्रॉब्लम। ट्रू। अच्छा टाइड को देख लेते हैं। सर टाइड तो है ना सर, टाइड पूरा का पूरा भर देगा, टाइड सर ऐसे आएगा और पूरा का पूरा भर जाएगा, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी, अरे भर तो जाएगा, 6 घंटे बाद खाली भी हो जाएगा, बिग प्रॉब्लम। सर क्या सर, क्लॉकवाइज भी रखो, एंटी क्लॉकवाइज भी रखो, उससे वो घूमता रहेगा, ये भी देखिए। अच्छा वेव डिपेंड्स ऑन विंड सौरभ, अगर वेव कम हो गया तो तेरा पंखा घूमना बंद हो जाएगा। ट्रू। एंड देयर इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ सबमर्जेंस ऑफ द फैन आल्सो, मिनिमम अमाउंट ऑफ सबमर्जेंस ऑफ द फैन आल्सो, उतना पानी भी होना चाहिए, प्रॉब्लम और नॉट। सो बहुत तगड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इन लोगों ने काम किया, दे केम अप विद एन आइडिया, दे मेड अ वॉल। वॉल इज व्हाट, परफोरेटेड, ठीक है, वॉल इज परफोरेटेड। व्हेन द वेव स्ट्राइक्स ऑन इट, व्हाट विल हैपन टू द वाटर? वाटर विल एंटर, यस नो, वाटर विल एंटर और नॉट? देयर इज अ परफोरेटेड वॉल, परफोरेटेड वॉल मतलब छेद है, तो पानी तो अंदर घुस जाएगा। When water was not there, what was there in this room? What was there in this room when water was not there? Air was there. So when water comes with a lot of pressure, will the air be compressed? Can we use that compressed air to rotate something? ये तो हो सकता है, तो ऐसा कर दिया, परफोरेटेड एयर चैम्बर। फिर मैंने कहा ना, अभी एलिमेंट्री लेवल्स पर हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वी हैवंट वर्कड अ लॉट ऑन दिस। जो भी कहता है वेव की, जब हम बात करते हैं, वेव वाला नेसेंट स्टेज में है केरला में। विडीनियम, विडीनियम कहते हैं इसको, या विजिनिजम, जो कहना कह रहे हो यार, मूस पॉइंट, और इधर वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में भी, ये तो केरला के लिख रहा हूँ, तंगचेरी। वेस्ट बंगाल में एक है दुर्गा द्वानी, दुर्गा द्वानी, दुर्गा द्वानी में तो नहीं शायद टाइडल है, दुर्गा द्वानी का मिसी रखो वेव वाला, दुर्गा द्वानी टाइडल। तो वेव्स पे कुछ काम चल रहा है, कुछ ऐसा है। अभी मैंने आपको क्या बोला, परफोरेटेड चेंबर टेक्निक। सो मेनी टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड, बट वन ऑफ देम इज दिस। कुछ एग्जांपल, आई सेड नेसेंट स्टेज, बहुत ज्यादा वो नहीं है। अच्छा एक और चीज थी, इफ यू रिमेंबर स्कूल में, इफ यू वर अ साइंस स्टूडेंट इन योर +2, देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज पाइजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड पायरोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सुना है? ये कुछ मटेरियल होते हैं, these are some solids, these are some solids. Piezoelectric is when you press something, pressure will cause these crystals to generate current. Piezo crystal or piezo crystal, yes. Pyro crystal is when you increase the temperature, heat will generate current. So tell me, if we are able to put these piezoelectric crystals in the path of waves, can we expect current or not? Just giving you ideas, just giving you ideas, falling in the domain of science, falling in the domain of science. This is how there. तो ये वाला जो आसान तरीका है ना, डैम वाला is not going to happen
Dam wala is not going to happen in the case of waves. Waves will have slight modification, and that is what we have. Is everyone with me on this? Wave is in the nascent stage of this. अच्छा, अब आते हैं tidal पे. Tidal also. Now tidal के लिए there is a problem. कुछ limitations हैं tidal के लिए. Number 1, time limitation. Rise and fall of water. So normally the thought comes, okay, when the water goes up, तो उतना potential energy मिल गया है, so potential energy is there. But the potential energy is not going to stay like that, because after 6 hours the tide will go back, up, down, up, down. और एक और चीज, वो जो टर्बाइन है ना, वो टर्बाइन टू रोटेट, it must get submerged. Yes or no? उसका कुछ पार्ट सबमर्ज होना चाहिए. इमेजिन अगर टर्बाइन का बस इधर ही थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो टर्बाइन को हिलाएगा भी नहीं. Yes or no? So there must be a minimum tidal range. हाई एंड लो के बीच में अराउंड 3 meters टू बी कमर्शियली वायबल. अगर कमर्शियली वायबल होना है तो इतना मीटर होना चाहिए. और इस पे मैं लिख दूं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेयरिटी. 3 मीटर टाइडल रेंज बहुत बड़ी बात होती है. 1 मीटर का टाइड इज समझ में आता है. लो वाटर ये मीन सी लेवल है, एवरीवन दिस इज मीन सी लेवल. ठीक है, मीन सी लेवल से 50 सेंटीमीटर नीचे गिरता है, 50 सेंटीमीटर ऊपर उठता है. टाइडल रेंज इज व्हाट? 1 मीटर. Is everyone okay? 1 meter is considered big tide here. 1 meter is considered big tide. Get that? 3 meters world में है. I've traveled so many places in the world. बहुत rare यार हमको 3 meters मिलता है. 3 meters पे तो टेंशन हो जाती है कि टाइडल पोर्ट है. That means the port is tidal. तो ध्यान रखना पड़ जाता है. So that is it. अच्छा, 3 meters up down in the ocean doesn't matter. अगर ये ocean है, suppose this is the ocean wall में बात कर रहा हूँ, and if the water is here, it rises 3 meter and falls 3 meter. कुछ नहीं होता. What will make the magic happen is if there is a inlet जिसमें पानी घुसेगा, और यहाँ पे अगर ये 3 meter up down होता है, so we need a narrow inlet. Do we get that? What are inlets called? Creeks. Yes or no? They can be creeks, they can be channel, they can be inlets. Yes or no? अगर ये होगा तब ज़्यादा advantage होगा, not just open sea. So we want some inlets within the coastline. So third point is location specific favorable geographical condition like inlet, creek, etc. और fourth is ये costly भी है, not easy. तो सबसे पहले लगा फ्रांस में लेरांस वैली और लरांस. Where? France. Then north of Russia where we have the White Sea. White Sea के पास है किसलय गुबा. किसलय गुबा. Where? Murmansk. Murmansk. White Sea में एक इनलेट है, उसमें जा. इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा कांडला पोर्ट. कांडला पोर्ट में 6 मीटर का टाइड होगा. कांडला पोर्ट इज टाइडल. और वेस्ट बंगाल में ये जो हल्दिया रीजन है, ये भी डेल्टा रीजन इज क्वाइट टाइडल. सो दुर्गा दुआनी क्रीक. दुर्गा दुआनी क्रीक इन वेस्ट बंगाल. सो लेवल के पास क्रीक्स में पानी आएगा, ऊपर तक उठेगा और नीचे जाएगा. ठीक है. आपने सुना वर्ल्ड हाईएस्ट टाइडल रेंज कहां पर है? वर्ल्ड हाईएस्ट टाइडल रेंज विच बे? बे ऑफ फंडी, कनाडा में. 6 घंटे में पानी 10 से 15 मीटर उठ सकता है, फिर बे खाली हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा. सो मॉर्निंग में इफ यू गोइंग टुवर्ड्स द सी, इट इज एडवाइज भाई बहुत ज्यादा सी की तरफ मत जाना, वो सारा पानी आ जाएगा अंदर. सो यू कम बैक. बे इज एब्सोल्युटली एम्प्टी. When it is low tide, the bay is empty. People can walk on it. In fact, the ships and boats which were in the bay, वो सब जमीन पे बैठ जाता है. And then the water will fill up. It will go up to a height of 12 to 15 meters. So that's huge. Do we get that? क्यों है ऐसा? वहाँ की geography. It's a narrow inlet, and the tidal forces are also means the tidal movements are like that. Everyone okay with this? So wave energy, tide energy, लिख सकते हैं वहाँ पे. कुछ examples भी मैंने आपको दे दिए. Wave I said is nascent tidal, ocean currents को भी कुछ कर ही नहीं. Geothermal energy again very specific locations, and we haven't been able to exploit it either. ऐसा कोई नहीं कि ओशन से हम थर्मल एनर्जी निकालें. बायोमास एनर्जी कहां पर है? बायोमास में वी यूज सीवीड. हैव यू हर्ड ऑफ सरगासम? ये एक सीवीड है. जनरली नॉर्थ अटलांटिक ओशन में दिस फ्लोटिंग सीवीड इज देयर. गेट इट? इन वन ऑफ द लोकेशंस इट इज सो कंसंट्रेटेड दैट प्लेस इज कॉल्ड सरगासो सी. उस जगह पे सरगासो सी है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, where you also heard of something called as a Bermuda Triangle. So Bermuda Islands, Bahama Islands, and Sargasso Sea, उसी region में, that is in that region. So what we do is we take this seaweed, sargassum or kelp, and dry it up. Take the seaweed, dry it up, and then burn it. Take the seaweed, dry it up, and burn it. Good source of energy or bad source of energy?
वेरी बैड। वाई? पोल्यूट भी करेगा, कैलोरिफिक वैल्यू भी नहीं है। आपने सुना है डेड वेजिटल मैटर, इसको स्वamp में डाल दीजिए, इट विल टर्न इनटू बॉग। ठीक है, bog will turn into peat. Peat is the first stage of coal formation. So swamp, bog and peat ये क्या है? Organic waterlogged soils है। ठीक है, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, वो सड़ना शुरू हो रहा है। Peat will turn into lignite. Nine meter thick peat, 9 meter thick peat, if put under conditions of high temperature and pressure for 300 million years, will result in the formation of 0.3 meter thick lignite seam. कैसे बनता है कोल? लिग्नाइट को दबा के रखोगे तो क्या बनेगा? बिट्यूमिनस। बिट्यूमिनस क्या बनेगा? एंथ्रासाइट। बट आई वांट टू टेल यू कि ये देखिए कि जो पीट है, पीट कुछ भी नहीं है, 9 मीटर, वो कितना रह जाएगा? 0.3 मीटर, 30 सेंटीमीटर तक रह जाएगा। सेम थिंग अप्लाइज टू सरगसम। इस सारे मटेरियल को अगर आप जलाएंगे, इफ यू पुट इट टू फायर, दिस विल बर्न लाइक वुड, दिस विल गिव अ लॉट ऑफ स्मोक एंड लो एनर्जी पर यूनिट। इसको बोलते हैं कैलोरिफिक वैल्यू, वो भी लो है। सो पीट इज नो गुड। लिग्नाइट ठीक है, कोल है, बट नथिंग लाइक बिट्यूमिनस कोल एंड नथिंग लाइक एंथ्रासाइट कोल। एंथ्रासाइट कोल इज हार्ड कोल, ये एकदम हार्ड वाला असली कोल है, ये सॉफ्ट कोल है। इसको क्या बोलते हैं? लिग्नाइट को ब्राउन कोल। लगे हाथ, मैंने आपको कोल बता दिया। यू नो व्हाट इज कोल? कोल कहाँ पे मिलता है? कोल माइनिंग में मिलता है। कोल के बेड्स को क्या कहते हैं? सीम। कोल का जो लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड एज सीम। सो कोल की माइनिंग करनी पड़ जाती है। माइनिंग इज नॉट इजी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, टुडे वाज टॉकिंग अबाउट एनर्जी, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, लैंड बेस्ड भी आपको आई एम श्योर समझ आया होगा, oil and gas also you understood. So I'm just saying, just like this vegetal matter is not a very rich source of energy, likewise biomass, जिसमें kelp हो गया, sargassum हो गया and other things, इन सबको ड्राई करना और उनसे एनर्जी निकालना is not a very efficient way. Is everyone okay? कहाँ मिलेगा? कोस्टल एरियाज में मिल जाएगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे यू विल गेट सी ग्रास ऑल्सो, सी ग्रास, kelp, weed, sargassum सब निकालो और सबको जला लो। So that's not a very good idea, but it happens. टाइडल का ऐसे वार्म करंट और कोल्ड करंट ये होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। बट ओटेक इज नॉट टू टाइडल, इट इज नॉट अ टाइडल एनर्जी, बट इट इज यूजेस द थर्मल ग्रेडियंट बिटवीन सरफेस एंड सब सरफेस ओशन वाटर। थर्मल ग्रेडियंट, उससे ओटेक बनता है। ऑयल ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। इज एवरीवन विद मी? ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, व्हाट इज इट, उसकी बात करते हैं। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। वेयर आर वी? दिस इज द ओशन सरफेस, this is the bed. Will the three layers have the same temperature? Which one is the highest temperature? Which one is the highest temperature? Highest and coldest. Especially if we are talking of tropical and subtropical. Not in temperate and polar region, but in tropical and subtropical, it is seen कि ये जो temperature है ये 25 डिग्री सेल्सियस होगा और ये जो temperature है -2 डिग्री सेल्सियस होगा. Can you see a huge difference? So this is 25 and this is 15. So can I say that there is a 10 degree Celsius temperature difference? True. Now all we need to do is एक apparatus डालिए इसमें, an apparatus of tubes, ठीक है, and in that tube put a gas which is liquid at 15 degrees and gas at 25. So when it goes to the lower levels, what will happen to the gas? It will turn liquid, yes or no? And when it rises up in the higher layers of the water, it will heat up, it will turn into gas. So gas, liquid, gas, liquid, gas, liquid, yes or no? When it is turning into gas, will it exert pressure? Yes or no? Can we use that pressure? So thermal difference used to create a pressure difference because of the gas which is chosen in the tubes.
has a boiling point somewhere in between. कभी अमोनिया गैस यूज कर लिया, कभी कुछ कर लिया, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. दिस इज कॉल्ड ओशन थर्मल एनर्जी. So there is a thermal difference between the top layers and the middle layers. You identify that which one is appropriate for your gas and make your gas move in that. ठीक है. क्या आप जानते हैं ऐसा ही कुछ रेफ्रिजरेशन में यूज होता है? A gas is made to move, condense, cool, condense, and then vaporize, cool, condense, vaporize, cool, condense, vaporize, and when it vaporize, vaporization causes cooling. Yes sir. Cool, condense, vaporize. और उसके लिए कंप्रेसर लगाया जाता है. कंप्रेसर will do what? Compress. फिर cool, condense, vaporize. तो वहां पर भी वैसी ही एक टेक्नोलॉजी लगाकर, नॉट द रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी, दिस इज कॉल्ड ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन. OTEC is a way of harnessing the energy from the water from the fact that the temperature of the different layers is different. Is everyone with me? So can I consider marine resources as a chapter to be over? You can handle the biotic resources, you can handle the mineral resources, and you can also handle the energy resources. I thought of questions also. I've given you diagrams also. I've given you a breakup of how you should write the answer. Examples भी हैं, सब कुछ है. I'm sure concept wise that's okay. एक बार PYQ जरूर देखें, and from the PYQ you might try to do it. So is there anything called as salinity gradient? Yes, Megha, there is salinity gradient. We will be studying salinity gradient when we do tomorrow's class. Tomorrow's class is on ocean currents. So salinity decides the density, and because of difference in density, ocean water moves. It is not energy that is harnessed, but ocean water moves, and that movement will lead to tides. Oh, sorry, not tides, ocean currents. So we will be talking about ocean currents tomorrow. Is everyone okay? Any questions? Request to all the students who have joined from geomorphology or oceanography. I hope you are doing the climatology lectures, basic climatology lectures. What is atmosphere? What is evaporation? What is condensation? What is heat transfer? How the winds blow? They will be needed. They will be needed after 2 classes. Do we get that? Please do that. अगर आपने air circulation तक कर लिया, बाकी it will become easy, not a problem. ठीक है? Otherwise होगा क्या कि you will be able to understand the class also, but you will have that vacuum in your mind कि वो बचा हुआ है. So it is good time. That's why yesterday also I took a class, took it as a reminder. I also have a plan. No, I know you people have your own plans. So in between, how can I fit in? So मैंने एक reminder के लिए भी कल class रखा. I know Sunday is not an easy class, but we did that so that all of you can benefit. आप लोगों की integrity में कोई crack ना आए. So I was supporting you in that. ठीक है? So environment में, atmosphere के at least 5 lectures should be done. So एक कल कर लिया था, एक आज कर लीजिए. Preferably आज अगर कर सकते हैं तो आज करिए और फिर उसके बाद then we'll have the next one. ठीक है? So make sure you do that, and you can do them at 1.5x. 1.5 times. That can also be done. We have a class at 6 p.m. That class is for Indian industry, so Indian geography, and then 9 o'clock at night for 1 hour. Yesterday also I think I took 1.4 for 7 घंटे लिया था. I'm not taking long ones. I'll take a 1 hour class in the evening. That will be on environment, environmatics. So thank you. Bye bye. See you in the next class today evening.